Good evening, everyone. Good evening to all of you on Facebook as well who are watching me live in the special group. Of course, we are now here for the episode number 10. Let me share my screen. So, in the previous episode yesterday night, we have covered till query number 135. And of course, now it is time to start session number 10. Which is Financial Pain Points FPMC series. So as usual, all my presentations will begin with thanking the Lord Almighty who's given me much more than what I deserve. And of course, when it comes to finance, I have to thank my dad as well, who has been instrumental in teaching me the clinical part of finance, management, law, and so many other things. When it comes to finance, okay, just wanted to check whether I'm live or not. Yes, I am. So this is my brief CV, all aware of it by now. Let's not stop here. And we are doing this FPMP series on the, you can say, dawn of the new year and of course Christmas holidays. And so it is reflecting in the attendance as well. So session number 273. One base for today. Get a pen and a paper. Keep noting down the main points. Listening will never help. Jotting down the main points will surely do. Writing is the best form of learning. And of course, you may need to post the takeaways. So what are the learning objectives? Objectives are to complete all the pain points by session number 11 tomorrow. Tomorrow we have a special episode. And of course, the morning episode of Yep series won't be at the regular time of 6:45. It will be at 8. It will be not a 90-minute, but a 120-minute session. And the FPMC episode will not be at 7:30. It will be at 5 p.m. Again, it will be a 120-minute episode, 5 to 7, or whatever time we finish. So the end time is not sure. Half an hour plus minus, 15 minutes plus minus, all are included, and we will be completing the pain points tomorrow. So this is the FPMP series, workshop notes 69, 67, 69, 71, 73, and tomorrow 75. This is episode number 10 of the Finance Pain Point series, webinar number 273. And disclaimer is that many colleagues have mismatched the you can say the points. They have added practice pain points in the finance and finance pain points in the practice. But I'm sure I won't be doing any bias, and we'll try to answer as much as I can before you can say we finish. So let's begin from query number 136 from Chennai, Tamil Nadu. Charging a standard one price for all patients is difficult to execute. In some cases, we need to be flexible as fear of losing out on the patient takes over our heads. Purchasing of materials, maintenance, and upgradation of equipment charges almost make it 70% of our income share, living with less than desired in-hand income. Number one, charging a standard one price for all may be difficult to execute. I'm not sure because we have been charging same. Now, if you say that we need to be flexible for the fear of losing out on the patient, that means you are undercharging for some. If you are overcharging for some, then I would still understand. But if you are undercharging for some, it reflects in your point number 2 as well. For a normal standard dental clinic, if you are charging reasonably well, your GPM NPM should be in the range of 50. So if your profit is 30%, either your charges are high or your FOMO is high. FOMO high means you're buying things without even a thought, and of course, which is reflecting in your expenses, or you can say whatever you can say clinic overheads are there. So you will have less profits to carry on. So calculate your costs, standing in terms of GPM and NPM, and of course, don't try to charge differently. Have a standardized pricing, because tomorrow you will be in a problem when patients, you can say, confront you that you charge X amount from me and Y amount from my referral patient. That'll be changing. Of course, if you charge higher, it may still not be an issue. You may say that the pricing has increased, so we charge that. But if you charge lower, you will be in a problem. So think before you execute that. And I hope that answers your query. So query number 137 from Indore, Madhya Pradesh: lack of high ticket patients and bargaining patients. Simply saying, if you are lacking high ticket patients, everybody wants to high ticket patient, but what is the reason behind not getting it? Because you are not have yet built up your brand, and brand building does not mean कि शहर में आपके नाम के पोस्टर लग जाएंगे. Brand building means patients look at you with an authority, look at you with some credibility in their mind. And of course, when you have certain things of that sort built up,
you will surely have something going in your favor that patients can blindly trust you. If they are not trusting you, then that means you have not still been able to execute in their mind that you are too skillful and too precious to be left out. And of course, I believe that our patients are a reflection of our own character and own credibility, and whatever we do in our life is actually reflecting in the way they react with us. And if you're bargaining patients, that means you're not setting the context right at the start. It needs to be settled in the patient's mind. What are your charges, what are your settings, what are the treatment plans, what are the options, what are the details of that. And of course, once you do that, you need to give them a proper clear picture or a clarity of what you will be, you can say, or what they would be expecting in the treatment in terms of whatever post-op results, satisfaction, outcome, or you can say you need to be doubly sure about what you are offering. So I hope this answers your query. So query number 138 from Anand, Gujarat. What is the ratio to invest in different assets at the age of 34? I have in my family, all four are dependent on my house. And it should be in equity. You can make it 50 also. It make a huge amount of difference. But yes, it is the age when you can spare some amount aggressively in a you can say not in a spend to spend, but in a spend thrift mode to invest. If dependents are, you can say, covered under your basis, your medical insurance is covered, your term insurance Okay, I think I was disconnected for a while. Never mind. Let me just resume. So till which point did you guys hear? Please tell me. Till which point could you hear me? Can anybody type in the chat? Till which point did you hear me? Okay. Okay. Great. 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 Thank you. Just let me check at the FB part as well. Okay. 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 So if your basics are covered, if your all members are covered in terms of basis and basics, your medical insurance is there for all of them, family floater plan kind of a thing, or a term insurance that God forbid something happens to you. And of course, the professional indemnity is there when we are working, and your disability plan and your emergency fund. If those things are covered and your household expenses are being met, trust me, I would believe that your household expenses would include your kids' school fees also if they are school going children. So if you're covered everything in 30K and the bases are covered, invest aggressively. Invest aggressively. Now, I don't mean that put everything in equity. What I mean is that whatever you can spare, bases covered, put that in your invested amount, because this is the time where you can actually do that. You may not be able to do that something at the later point of time. So should I invest aggressively in small cap fund at this age? Yes, you should, because this is the age when you can take a little bit of higher risk. Till the age of 40, you can invest aggressively as well. You can get a better return on investment. You can put an amount, but yes, identify your risk appetite. Where do you lie? How much amount can you spare? How much you can say risk you can take? Some guidance on how to invest in direct stock market. Don't invest in stock market. For people who have high number of dependents and they are the only one earning, that means your clinic is your source of income. If that is the case, don't
spare your time for stock market. I'm saying it openly and blatantly. You have to identify the situation, your unique situation, which tells you if you are dependent only on income and you have no other sources of income, then please don't waste your time. You may get a good bet or a deal, but eventually it is like, you can say, an addiction which will take off your attention from your clinic time. See, I'm not against stock market. I also partially invest in stock market, although I stopped full time trading in 2017 with the of course with the consent of my dad. But I would still say, even though today I have multiple sources of income, I still don't spend my time with it, because it is a full time thing which takes a lot of out of me if I have to think on those grounds. So, how to choose script for long term portfolio build up? It's very easy. You need to divide your, you can say, eggs in one basket. You need to invest equity as per your age, and from that equity, how much is your risk appetite? Invest in small cap. The remaining portion that you're going to invest that in debt, hybrid, and of course, firstly fulfill the taxation limits. Means ATC, ATC CDB, whatever it is, जो भी है, fulfill those limits. उसके बाद कुछ बचता है, you can spare some amount, of course, doing the hedge also in the form of gold or SGB. If you have something left after that, then you can again go back to equity if your risk appetite is little high. And of course, not in the small cap. Small cap should be on the portion from there, which I've already mentioned. This is over and above 45% in equity that I've told you in the start. Whatever is left, put that in you can say large cap mutual funds, which are long-term bets and will surely give you returns if you hold it for minimum 5 years. So that is what is my suggestion for you. But yes, if you are looking for a long-term portfolio build-up, catch hold of a financial advisor who can guide you. If you want my services, I can do that for you as well, but preferably get someone near you if you are, you can say, willing to go in for a portfolio build-up kind of a thing properly. So I hope that answers your query. Query number 139 from Patiala, Punjab. Investment in mutual fund is right choice or not? It is indeed one of the great choices, not the right choice, one of the greatest choices. Investment in real estate, how to invest? See, as long as investment in real estate, you can say, comes with a rider of black and white, I'm not really sure about that. And yes, my criteria are very simple. You invest in other assets, be it the government bond, be it the RBI bond, be it the cryptocurrency, be it the real estate, be it the silver also. I'll go there only once my bases and basics are covered. If your 5 bases and basics are covered, I always say burn your money anywhere, wherever you want. So I just gave a suggestion that if you can spare, if your age allows, if you can spare money to invest aggressively after your all the quota has been done for the taxation part and the debt part, debt always you can say you will invest in a certain limit only. But after that, you can still invest the remaining in the large cap mutual funds. That is going to give you a good return. How to earn rental income? You have to buy a property for that. So I am not a big fan of property. Property is like a gamble, and the way infrastructure is being built up in our country, you never know. You buy a good property and it gets to 1/4 of the value. But yes, reverse is also possible. It gets to, you can say, 4x of the bought value. So it is like a gamble only. So you win some, you lose some. You want to only have a rental income, or you want to only have a fortune in your property. It is a risk. Take at your own peril. Don't ignore the power of the basics, or don't ignore the power of the investment in the basics. Then basics में investment की ना 5 में, they are good enough, more than good enough. I've given the charts multiple times, but yes, of course, लेकिन लोगों को उसमें thrill नहीं मिलता है ना, because the, you can say, the growth starts after properly, except for mutual fund or gold and Hesba, of course, the gold debt, you can say, in equity also, partially in debt also, in hybrid also, the growth starts, you can say, seemingly visible to a substantial amount after 10 to 15 years. And people don't have the, you can say, बोलते हैं ना हिंदी में, गुद्दा नहीं होता है उस देर तक इन्वेस्टमेंट को रोकने का. हम बोल तो देते हैं कि आप इतनी देर तक रखो, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक इन्वेस्टमेंट को रखो. Who keeps it? Very few people. That is why most of the people live a mediocre life. And you can say we get examples to share online when we see those examples that he held this stock, he held this mutual fund for so much amount of time.
So think about it before you invest into real estate. It can be really tricky also, but then the rest is your choice. I hope that answers your query. So query number 140 from Navi Mumbai, Maharashtra. No management of earned money. Then you need to follow a particular formula where you can divide your money, budget your money as per your needs, as per your wants, as per your wealth creation, as per your own recreation, and multiple headings. Of course, you need to plow back some money into your own business as well for upgradation. And of course, I always advise something to be put in charity as well. It need not always be in cash. It can be in kind also, but then it's absolutely your choice. Start budgeting the money. Start experiencing those situations where you can actually go in for investment on a regular basis, and the money management is on a disciplined basis. So I hope that answers your query. So query number 141 from my city, Ludhiana, Punjab. How to multiply the wealth? Easier said than done. I would say it is easier to say, but fortunately or unfortunately, people look out for the short-term alternatives. Multiplying the wealth is the only way I know. The legal, authentic way is compounding. So wherein you multiply so many times. So even the debt money can be multiplied so many times, but that it takes time. It takes about 15 to 20 years. It is not easier, but then that is safe and secure money as well. So you don't need to even track that also. It is there. But if you put everything in basket, everything in market linked products like debt mutual funds, like you can say equity, like hybrid or balanced advantage mutual funds, then it becomes a, you can say, peril on you to actually track everything from the market, and then you are going to face this problem. So guys, can you hear me and listen to me? Because Shravani just mentioned me that he can't listen to me and hear me or see me also. If you can hear me and listen to me, please put a message in the chat. Okay, thank you, Dr. Shravani. So the ideal way is simply to trust the power of compounding and let the compounding weave its magic. So I believe that that is the only legal and authentic and ethical way that I know. I can't advise you something like a shortcut. Gambling is always a shortcut. Cryptocurrency is always a shortcut. Putting, you can say, full dedicated attention to stock market maybe again a shortcut. Gambling shortcut. Putting money in F&O future options is a shortcut. I don't advise any of them because they are full-time activities and they'll take a lot out from you and putting your wealth at risk. So I hope that answers your query. Query number 142 from Ahmedabad, Gujarat. Retirement plan, what is best? Which scheme we should take up? NPS, National Pension Scheme, any day, any time. Lowest cost mutual fund as well. This is lowest cost pension plan, lowest cost mutual fund, you can say. And of course, you can choose your equity percentage, you can choose your POP, you can choose your service provider, you can have a choose your PFM also. So all those things are in your hand. You can control it. Aggressive style, auto style, trust the government, trust yourself, trust your abilities. In any case, you will make the money. This is one of the greatest plans where you have actually very less cost flowing in, and eventually you will not need to track much also. You may need to track it just once in 3 or once in 6 months. That is the only way I know is there. Share market, lack of service in sense of trading any good option as learning analysis and doing all required time investment, which is same as OPD timing. You hit the nail right on its head. The same thing I am conveying. The time is parallel to your OPD timing. In fact, it is more. Rarely some of us work till 3 or 3:30. The stock market lasts till 3:30. So if you are really willing to put in, you can say I've seen people who having 3 or 4 screens put up to track, and you can say do everything. It is a very concentrated job. I'm not really sure whether I would be interested in doing this kind of a thing right now. So you can उसके अलावा तो आपके पास ऑप्शन ही है ना कि आप सुनी सुनाई बातों पे टिप्स पे इन्वेस्ट कर लो, which is a very very wrong approach for stock market. So hearsay approach may or may not give you, it will drown you as well. It can drown you as well. So I believe if your clinic is doing well, you don't need to focus anywhere in that time zone.
Third, main header to investment from must do to sequence wise and rest of the options. Main investment always, debt always, hybrid always, equity always, hedge always, and HESBA always. Debt for me, PPF is the new debt, giving you 10.1 after tax, you can say, or before tax, sorry, because after tax it will be 7.1. Technically, it is tax free. Just to make you understand, I'm saying 10.1. So for hybrid, lowest cost mutual fund is, you can say, or a pension fund is National Pension Scheme, giving in the range of 10, 12, 11, 10, 11, 12, 13, 10 to 13% range. Equity mutual funds, if you go in for small caps, they have given as much as up to say 35 to 40% returns. But on an average, mutual funds give you 12 to 16% returns over the long period of time. I put up in group, there will be periods when stock market 5 साल की रिटर्न 2 साल में दे देंगे, लेकिन देयर विल बी पीरियड जब आप 3 साल कुछ नहीं दोगे और नेक्स्ट 2 साल में वो पिछले 5 साल की रिटर्न दे देंगे. देन यू कैन नॉट रियली प्रेडिक्ट इट, बट यस, ओवरऑल एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू होल्ड इट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. Then the fourth is the hedge. The gold in the form of SGB is the best option. You can buy digital gold, you can buy gold ETF, but those are tax, you can say, not tax saving options. Only the tax heavy option is the sovereign gold bond, which gives you additional interest also on your, you can say, parked money. And yes, बैंकिंग में हम लोग हर बंदा कम से कम 5, 8, 10, 15 लाख रुपए बैंक में रखता है. वाई नॉट कीप इट इन हेस्बा वेयर यू गेट अ गुड रिटर्न आउट ऑफ दैट. मैं नहीं कहता आप 7% वाला लो, 5.5, 6, 6.5 वाला तो ले लो. 2.5% वाले से तो फिर भी बेटर है ना. थिंक अबाउट इट. एंड ऑफ कोर्स sequence wise and rest of the options depend upon taxation also. So learn taxation properly. किसी भी इन्वेस्टमेंट को जानने के लिए अगर किसी को टैक्सेशन नहीं आती है तो टाइम वेस्ट कर रहा है. You know so many things, and you can say these things actually are very, very, you can say, very tricky when it comes to doing. So if you're interested, I'm doing a workshop next month in January, and of course you are welcome to come on board. I'm not sure whether you're watching it or not. So I hope that answers your query. Query number 143 from Bengaluru, Karnataka. I have trouble with tax filing. I do have a CA who does presumptive taxation. Last financial year, my total income was 18 lakhs. Expenditure was 12 lakhs. So profit of 6 lakhs. Is presumptive taxation good for this? If presumptive is considered, my taxable income is 9 lakhs, which is 3 lakhs more than my actual profit. Please guide what can be done. See, it is very simple that presumptive is the easiest way. For the CAs, you don't need even a CA for the presumptive taxation. You can file your return yourself. And now even the balance sheet is not compulsory, although I advise strongly that a balance sheet still be made for the presumptive taxation, especially for clinicians like us, because it helps us to carry forward our capital account, which is a big importance, you can say, thing. So profit of 6 lakhs, I'm not talking, your total income was 18 lakhs. So that is gross. Expenses wise 9. Where are your deductions? So if you have not invested anything, you will be actually falling in a zero tax range also, or close to very less tax range also. So I always believe that if your expenses are actually higher, then that means your charging is lower. Because on an average, if you are not interested in a FOMO approach, you will have, you can say, charges in the range of 45 to 55%. If you are falling close to 60% of the same, then probably something, surely you can say, so not even 60, you can say you may be even more than that. So you are almost 65% of that. So if you're having 66%, then somewhere either you are having a firm approach of buying expensive materials without any need, stocking them without any need, and or means either of the options are possible, and or maybe then you're charging low. So increase your charges so that your expenses can be justified. Presumptive is any day better. You don't need a CA for that. If you have trouble with tax filing, get a knowledge, get a hands-on thing, learn taxation. As I say, ये सारी चीजें पैरामीटर्स जो होते हैं ना, एक पेज पे उतार के assess करना बहुत मुश्किल होता है, because there are tax saving options which can actually decrease your tax output also. So you will feel the pinch कि मैं 3 लाख पे बिना बात के tax दिया, but technically you are paying not more. Maybe if I presume even that if you paid on 12 lakhs as well, probably you paid about 60,000 extra tax, or 60,000, or probably you can say 5%, or 20%. So probably close to 20. So you may be feeling the pain that 80,000 ज़्यादा tax दे दिया 9 लाख पे जो देना था.
it would have been easily 82 or 92,500, और अभी आपने दिया होगा 1,12,000 और 1,72,000. सो क्लासिकल एग्जांपल जो मैं अपनी वर्कशॉप में देता हूँ मिथिला की, मिथिला डेंटिस्ट, 8 lakhs and 12 lakhs, so 92,500 and 172,500, you'll feel the pinch. 80,000 plus 4% आपने एक्स्ट्रा दिया. बट yes, if you are saving only in 80C, 80C में आपको 46,800 का रिबेट मिल जाता. सो टेक्निकली आपको वो उतना टैक्स कम देना पड़ता, और आप एनपीएस ऐड कर लेते तो technically you would have saved another, you can say, 16,000, यस 15,600 और बच जाता. टेक्निकली 62,000 तक आपका बच जाता. आप 80,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं. मेडिकल इंश्योरेंस होता, कुछ और होता, एटीटीटीए होता, तो ऑल चीजें मिला के आप इतना टैक्स बनना ही अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो. So all these things also come into play. It's not about the cost figures, expenses anymore. You need to figure out the deductions also, whatever you are getting out of that. So if you are not having knowledge of that, learn it. 2024 is coming. Make that as a learning goal. So I hope I answer your query. No, it's still continued. Okay. So query number 2 from the same doctor is that I would like to know what expenditures can be considered for tax exemptions for us doctors. Is children's school fee considered? Only a portion of the school fee, which is known as the tuition fee, is considered, not the school fee that you pay in totality. And in any case, if you are thinking of a tuition fee as a rebate for 80C, that gives me a complete knowledge that you are ignoring 80C totally. This is the reason you have paid more tax on 3 lakhs. So think, थोड़ा सा सोचो. सो इतना हम नुकसान करते हैं, लेकिन एक वर्कशॉप पे हम पैसे स्पेंड नहीं कर सकते हैं. थोड़ी सी सोच बदलो, देश बदलेगा. And this is the reason I always say knowledge is more important. People don't spend time, people don't spend money, people don't, you can say, think of the long term. Short term सोचते हैं आज 10, 5,000, 15,000 बचा लें. That will be important for us. Do we have a limit for household expenditure? Burn all your 18 lakhs in household expenditure. Income tax department does not care even a damn. So 18 लाख वो बैंक में और पड़ा, और 20 लाख जितना मर्जी बर्न करो हाउस होल्ड पे, उनको कोई लेना देना नहीं है. उनको सिर्फ आपके ग्रॉस इनकम के बाद जो नेट इनकम होती है उस पर आफ्टर डिडक्शन या आफ्टर एग्जाम्पशन जो भी आपका टैक्स बनता है वो लेना है आपको. उसके उनको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में कोई ना रिबेट देनी है, ना कोई फर्क पड़ना. व्हाट अबाउट ट्रैवल एक्सपेंसेस? यस, ट्रैवल एक्सपेंसेस इफ एसोसिएटेड विद attending conferences means upgradation of knowledge. If travel expenses associated with, for example, you're going as a freelancer, you're going for consultation, and you're spending regularly some petrol, diesel, or maybe you can say spending something substantially going by a taxi or something, then you can claim those expenses. But this आपके ऑलरेडी एक्सपेंसेस 12 लाख हैं, आप और क्लेम करोगे तो आपके 12 के 15 हो जाएंगे. देन यू वोंट नीड अ प्रिजम्पटिव. सो चार्जिंग हाई करो ताकि 18 वाली चीज पहले 20, 22, 24 तक पहुंचे, ताकि आपका 12 लाख का एक्सपेंस तो जस्टिफाई हो. अगर आप 65, 66% एक्सपेंस कर रहे हैं तो देयर मीन समथिंग इज रॉन्ग समवेयर. या एक्सपेंसेस जरूरत से ज्यादा हाई है या चार्जिंग जरूरत से ज्यादा लो है. द बैलेंस शुड बी वेरी मच इक्वल. 45 to 55 रेंज होती है तो मैं हमेशा एडवाइज करता हूं प्रिजम्पटिव. बट अगर किसी के हायर एक्सपेंसेस होते हैं then you should not go in for presumptive, but then make sure that all things are genuine होती नहीं है यूजुअली, बिकॉज इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है. आई विल बी कंप्लीटिंग माय 24 years ऑफ प्रैक्टिस टुमारो ऑन 31st December. सो आई विल बी स्टार्टिंग माय 25th year. 24 साल मेरे को काम करते होंगे, उससे पहले 2 साल हॉस्पिटल में काम किया. सो आई नो द एंट्री केसेस कि कितनी रेंज में एक्सपेंस रहते हैं. एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम माय 24 years ऑफ एक्सपीरियंस. चार्जेस अगर जेन्युइन हो, आपके एक्सपेंसेस कभी भी, माय एक्सपेंसेस हैव रेयरली क्रॉस्ड 45% also. I am usually below that only. Most you can say 40 to 42% of range मेरी होती है. Yes, occasionally they reach up to 50, but I've never ever crossed 50, not even in the first few years of my life when these things were being handled by my dad. So ever since I'm handling them, never crossed even 45 also. 50 छोड़ो. तो think of it, how to manage these things is more important, but learning these things is equally important. हम लोग ट्रायल एंड एरर गेम खेलते हैं कि चल कोई नहीं, धीरे धीरे वक्त लगेगा, सेट हो जाएगा, सीख जाएंगे, ग्रुप में पढ़ेंगे, सीख जाएंगे. लाइफ टेक्स ओवर. नोबडी गेट्स अ गाइडेड लर्निंग, और गाइडेड लर्निंग के लिए लगता है हाय ये पैसे बना रहा है, मेंटर ऐसे कर रहा है. यू हैव टू शन दीज माइंडसेट्स. सो अगर ट्रैवल एक्सपेंस के बारे में सोच रहे हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंस के बारे में सोच रहे हैं, चिल्ड्रन स्कूल फीस के बारे में सोच रहे हैं, तो 80C, 80D, 80CCD 1B, 80U, 80I, 80TTA, बहुत सारे सेक्शंस हैं, उनके बारे में सोचिए. अब तो बहुत सारे नए सेक्शंस ऐड हो गए हैं, सो विच आई हैव एडेड इन माय न्यू वर्कशॉप आल्सो. सो थिंक अबाउट इट. इफ यू कैन,
please come on board. If not, of course, I'm not sure. Thank you. I hope it answers your query. So query number 144 from Udaipur, Rajasthan. Not confident enough to take up options related to investments insurance. So अगर हम प्रैक्टिस मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो कॉमन क्वेरी, लेट्स फुटफॉल, बार्गेनिंग पेशेंट्स, नॉट गेटिंग हाई टिकट पेशेंट्स. फाइनेंस की बात करते हैं, नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक अप ऑप्शंस. Guys, I'm running this community since 6 years now. It'll be 6 years in Jan end or Feb start. Almost 6 years complete. 6 years में इतना कुछ आपको दिया है, तो अब मैंने थोड़ा सा हाथ पीछे खींचा है. आई एम डेलीगेटेड मच वर्क टू रजत एंड रघु, respectively for PM and finance group, because I shifted my focus to content online on different media. Tried out Facebook for different things, content 100 जो 90-day challenge था, that will finish tomorrow. 2-3 blog रहते हैं, बाकी you can say done with the things till Monday. Tuesday का blog रहता है, Thursday का blog रहता है, Saturday का blog रहता है, और Friday का Instagram का reel क्रॉज़ल रहता है. वो चारों कल को आ जाएंगे. I'll be done. Of course, the Sunday live coaching blog as well of this week only. I've done for the previous all weeks. So if yes, from the new year onwards, the focus will shift on to different media channels. But this is the way I have been delegating things in or educating you about different things. अगर आप सिर्फ मेरे को ऑर्गेनिकली फॉलो कर लो ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक और वेयर और इंस्टाग्राम इवन नाउ, सो यू विल लर्न सो मच. यस, सिंक्रोनाइज नहीं होगा. कभी आप M सीखोगे, कभी B सीखोगे, कभी Z सीखोगे. A to Z तो सीक्वेंस में वर्कशॉप में होता है. बट यस, आई एम टीचिंग सो मेनी थिंग्स. अगेन, आई डोंट टीच A to Z in free. There are a few portions that I teach. There are a few portions I absolutely don't teach in free. That is, I can say I have to keep certain things for my workshops. Otherwise, what is the X factor in there? Why would people join the workshop? They'll watch the YouTube channel and get the knowledge from there. They'll get it. But yes, there are certain things that I do in a different manner. So if you're not confident, learn about these things related to investment and insurance. If you are not, then you can say you will still post another pain point in a similar manner. So I hope you get an answer to your query. So query number 145 from Bengaluru, Karnataka again. Increasing patients OPD. Be more visible, be more credible, have more authority, have a trust factor built in your patients via your cases, have a website, have an organic presence, have a social media presence. And of course, once you have validation point, then please go in for paid marketing or performance marketing. It works really that ways in today's times. Can't expect any other way. Word of mouth पे rely करते रहोगे तो पिटते रहोगे. That is the only thing. If we are not changing as per the new age methods, then we need to realize हर चीज बदल लेते हैं हम लोग टाइम के साथ. एंडो करने का तरीका बदल लिया. 2% से 4% से 6% पे आ गए. मैनुअल से रोटरी पे आ गए. टीवी प्लाज्मा से एलईडी से एलसीडी से एलईडी पे आ गए. एंड लाइट्स हमारी दूसरी तरह की हो गई. सो इफ ऑल थिंग एंड phones again became sleeker and now 6-7 inches thin phones, you can say laptops पतले आ गए 1.4 1.5 kg वाले. सब कुछ में अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन when it comes to OPD we are still relying on the age old methods of word of mouth. Word of mouth तो बोनस है भाई. वो आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो आपकी चॉइस है, आपकी लक है. But don't consider it as a way of strategy कि मेरे पास पेशेंट नहीं है. आप क्या एफर्ट करते हो आपकी ओपीडी के लिए? वो सब कुछ भगवान भरोसे मत छोड़ो ना. We always say God has been unkind to me. God is not unkind to you. God does only what you deserve. God gives you what you deserve. Sometimes you may get harsh things, you may get things which you don't deserve, or maybe some things you get more than what you deserve. So I always thank him that he has given me more than what I deserve. So of course it is a subjective thing, but if you are not making any efforts in that regard, how could you expect results? If you are not expecting results, then you need to understand that somewhere, somehow, the fault is lying. So I hope that answers your query. Query number 146 from Pune, Maharashtra. Looks like stagnant practice, limited growth, nearby dentist working at low cost. मेरे को ये आज तक नहीं समझ आया कि नियर बाय डेंटिस्ट का कच्चा चिट्ठा आप लोग कहाँ से ले लेते हो. मेरे को आज तक नहीं पता लगा कि मेरा नियर बाय डेंटिस्ट क्या चार्ज करता है. मतलब दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर ओन ओपीडी. यू आर लुकिंग एट अदर पीपल फॉर यू कैन से वैलिडेशन, लुकिंग फॉर देयर ग्रोथ. उनकी ग्रोथ में आपकी ग्रोथ नहीं छुपी है. उनकी ग्रोथ में आपकी ग्रोथ नहीं छुपी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गेट योर ओन डेस्टिनी, यू हैव टू ओन वर्क हार्ड फॉर योर ओन डेस्टिनी. सो स्टेगनेंट प्रैक्टिस है, लिमिटेड ग्रोथ है, तो थिंक ऑफ द फैक्टर्स, एनालिसिस कराओ कहां से कहां पे गलती है, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, कहां पे यू कैन से देयर इज अ
कैन से स्टेग्नेशन, किस जगह कन्वर्जन नहीं होती है, ओपीडी फुटफॉल नहीं होती है, ओल्ड पेशेंट का टर्नओवर नहीं है, रिटेंशन नहीं है पेशेंट्स की, कहाँ प्रॉब्लम है वो जज करो। हम लोग नंबर्स जानते नहीं है, सिर्फ पेशेंट नहीं है, पेशेंट नहीं है करते रहते हैं, लैक ऑफ फुटफॉल नहीं है, कारण ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करता, कारण ढूंढते हैं आसपास। वो 10 क्लिनिक और खुल गए, डीसीआई की गलती, वो क्लिनिक वो कम रेट में कर रहा है इसलिए वो कर रहा है, सारे पेशेंट कम रेट वाले हैं दुनिया में, इस हिसाब से तो महंगी चीजें बिके ही ना, ना मर्सिडीज बिके, ना ऑडी बिके, ना अच्छी स्टैंडर्ड की कोई और लग्जरी कार्स बिके। आई एम नॉट टॉकिंग, लेट्स नॉट इवन फॉरगेट दैट Hyundai, Kia, you can say these are also coming up with so many expensive cars, कितनी बिकती हैं ये सब कार्स। गुड़गांव में आई हैव ऑलवेज गिवन एग्जांपल, गुड़गांव में 100 करोड़ का फ्लैट था है, मतलब ओपन करा 7 मिनट में खत्म हो गई, and people from Delhi posted their query, patients not paying. You have to search out for patients, wrong target group को target करोगे, in fact तो आपको वही मिलेगा। इनफैक्ट वी डोंट टारगेट एट ऑल, जो आता है भगवान का प्रसाद समझ कर, देवी का प्रसाद, ईश्वर का प्रसाद समझ कर, जैसे ओम शांति ओम में 2007 में शाहरुख दीपिका की पिक्चर आई थी, ईश्वर का प्रसाद है, वर्ड ऑफ माउथ इज ईश्वर का प्रसाद, एंड इफ यू आर गेटिंग दैट यू आर थैंकफुल, इफ यू आर नॉट गेटिंग यू आर ब्लेमिंग एनीवन एंड एवरीवन इंक्लूडिंग गॉड। God is unkind. My luck is bad. Your efforts are bad. The first thing you need to realize, if you don't realize that your efforts are bad, bad things will continue to happen to you, and you will die as a sorry figure. Sorry to say that, but you need to improve. You need to improve that part. मैं ये क्वेरी 150 क्वेरीज दोनों में आंसर कर चुका हूँ, उसमें आगे सब हेड शायद कहीं मैं 4 क्वेरीज, कहीं मैं 5, कहीं मैं 1, कहीं मैं 2, बट ऑन एन एवरेज मैं कितनी क्वेरीज आंसर कर चुका हूँ, ये क्वेरी मैंने सबसे ज्यादा आंसर की। मेरे पास पेशेंट नहीं है, मेरे पास फुटफॉल नहीं है, मेरे पास बार्गेनिंग पेशेंट्स है, मेरे पेशेंट्स पे नहीं करते हैं, और मेरी ग्रोथ नहीं है, मेरी विजिबिलिटी नहीं है, बाजू वाला डेंटिस्ट कम पे काम कर रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वो कहाँ पे फॉल्ट है, लुक आउट फॉर द रीजंस, यू विल फाइंड द आंसर्स। And please don't mind, I have not pinpointed it. In fact, I don't even know who you are. So that is the reason I kept it anonymous. And these queries have been posted as it is by my staff only. You can see कोई punctuation, कोई grammatical correction नहीं किया हम लोगों ने, जैसे आई है वैसी की वैसी query post कर देते हैं। So query number 147 from Madanganj, Kishangarh, Rajasthan. Should I show all my income in white or not is a dilemma for me. Most of my friends and relatives are involved in marble industry, earning 8 to 10 lakhs per month and still hardly paying income tax, close to 1 to 2 lakh per year. So, investing all their black money in real estate and gold. I belong to a joint family. Father have a partnership firm, dealer of tractors, having sales of 18 crore annual. Wow. Still they pay a very small amount of income tax, approximately 5 lakh annually. I'm earning about 12 lakh annually, and if I go by proper system, I'll have to pay a lot of tax, and compared to people around me paying very less tax as compared to their income. Should I collect my income in cash and invest in real estate, or pay taxes sincerely and invest my money in stock market? So ये सारा जो है ना फॉर्मूला वो गाइडेड अप्रोच का है। When you have people you who are doing certain in a certain manner, that becomes a norm of the industry, norm of the society for you. So मैं तो ये नंबर्स हमेशा ग्रुप में डालता ही हूँ, कितने लोग 2% लोग टैक्स दे रहे हैं, 4% लोग 0% टैक्स रिटर्न्स हैं, 6-7% टोटल रिटर्न्स आती हैं। सो एज लॉन्ग एज, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, वो भी डायरेक्ट टैक्स नहीं देना मत दो, कोई बात है, हम लोग इनडायरेक्ट बढ़ाते रहेंगे। देन पीपल क्राई वी आर पेइंग सो मच ऑफ टैक्स। हम लोग इंडिया में 30% इनकम टैक्स देते हैं, and we pay close to, you can say, 35% GST also, 60 to 65% हम लोग टैक्स देते हैं। 30% है कितने, और 2% में दुनिया अपने आप को मिक्स कर लेती है, एंड उसमें कंपनीज भी हैं, उसमें सैलरी भी हैं। सो मतलब आई डोंट फाइंड अ लॉजिक इन दैट। एंड सारी चीजें जीएसटी की आप पे कर रहे हो, वो सारी उस पे, रेस्टोरेंट तो 5% पे, ठीक है ना, फूड इंडस्ट्री इज एट लेस, तो गोल्ड इवन इज एट 3%। तो मतलब कहाँ हम जीएसटी पे हम लोग कर रहे हैं, हाईएस्ट फिगर ले लो सब तरफ की, प्लस कर दो, प्ले अ विक्टिम कार्ड एंड से दैट वी आर मर गए, डूब गए, ये हो गया वो हो गया। लोग कहां से कर रहे हैं, बिकॉज वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो सेल नहीं शो करते हैं। कल को ऑडिट होएगा, कुछ होएगा, थिंग्स गेट रिफ्लेक्टेड। बड़ी कोठी में रह रहे हो, बड़ी कार परचेज कर रहे हो, बिकॉज यू कांट कर्ब योर वांट्स कि नहीं इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। एंड फॉर दैट व्हाट दे डू इज, हु हैव बीन शोइंग लेस रिटर्न, उनको हर चीज लोन पे लेनी पड़ती है, तो उनका वहां पे लोन की ईएमआई में इंटरेस्ट में जो जाता है ना, उसमें निकल जाता है, बिकॉज दे कांट शो मोर। तो कार भी लेनी है, कुछ घर भी लेना है, सब कुछ लोन पे लेंगे, वो सब कुछ होते हुए भी लोन पे लेंगे। तो कान ऐसे नहीं खींचा तो कान ऐसे खींच लिया, बात तो वही आ गई ना।
ईएमआई में इंटरेस्ट पे बैक कर दिया, यही टैक्स दे के अपना वाइट इनकम बना लो, अपना कैपिटल अकाउंट खड़ा कर लो। थोड़ी बुद्धि दे कोई ना दे। अब मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता बिकॉज आपके फादर भी ऐसे कर रहे हैं, सो सॉरी टू से दैट, बट ही इज डूइंग इट इन दैट सेंस। तो टेक्निकली 18 करोड़ वाले को अगर ग्रॉस इनकम के हिसाब से देखो 4 से 6% टैक्स देना पड़ेगा ओवर द ओवरऑल रेवेन्यू। तो 6% भी दो तो उनको 1 करोड़ टैक्स बनता है टेक्निकली। तो इफ ही इज नॉट पेइंग इवन 5 लाख ऑफ टैक्स, देन आई कैन टेल यू, यू कांट अगेंस्ट गो अगेंस्ट योर डैड। यही होता है ना, आइडल्स अगर हमारे गलत हों तो हम उनको करेक्ट करने के बजाय खुद करेक्ट हो जाते हैं उनके हिसाब से, और नॉट करेक्ट, रादर विल गेट मोल्डेड अकॉर्डिंग टू दैट। माय डैड आस्क्ड मी इन ईयर 2007, 2006 or 7, now that you are earning well, before the birth of my daughter, yes, 2006 only, 5 or 6, yes. So now you're earning decently well, how much tax you want to pay? So that tax क्यों देना पड़ेगा? So नहीं बेटा देना पड़ेगा, you should pay it. So he had been a service class citizen, of course 2001 में वो रिटायर भी हो चुके थे, so VRS ले लिया था उन्होंने। So in spite of that he was an honest citizen of India. He said नहीं बेटा देना पड़ेगा। कितना देना चाहता है? डैड मैं नहीं दूंगा टैक्स, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। नहीं, दिस इज रॉन्ग, यू शुड पे सम टैक्स। कितना देना? थोड़ा सा देना शुरू करो, पर देना शुरू करो। तो ही यूज्ड टू से, तो मेरे को होता, अब आप इतना कह रहे हो तो आपको टाल नहीं सकते, चलो डैड आप 500 रुपये टैक्स दे दो। ही सेड मैं दे दूंगा, बट तुम्हें शर्म नहीं आएगी? 500 रुपये इनकम टैक्स देते, आई एम टॉकिंग ऑफ 16-17 ईयर्स बैक। सर तुम्हें शर्म नहीं आएगी टैक्स देते 500 रुपये? नहीं सर मैं नहीं देना पापा, सब चोर है, पॉलिटिशियन है, ये है वो है, वॉट एवर लॉजिक्स आई हैड in that at that point of time. He said okay, no problem, you'll realize it. Then what he used to do was go to the back end, यहाँ पे 500 रुपये मेरा टैक्स निकला, ऊपर जाओ, उसके लिए कितनी इनकम दिखानी है, उसके लिए कितने एक्सपेंसेस दिखाने, उसके लिए कितना रेवेन्यू दिखाना। सो ही स्टार्टेड फ्रॉम द रिवर्स मैनर। सो ऑल दीज गाइज हु आर अराउंड यू आर डूइंग दिस ओनली, कि सीए गाइडेड अप्रोच होती है, इतनी मत इनकम दिखाओ, थोड़ी सी दिखा दो, थोड़ा टैक्स दे दो, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो, बट कुछ भी लेना है मेरे से बिना पूछे मत लेना, गाड़ी लेनी लोन पे लेना, वो लेनी लोन पे लेना। तो वो दे आर पेइंग बैक ईएमआई एज इंटरेस्ट। उनको ये विश्वास है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे, ईएमआई तो गवर्नमेंट को दे रहे ना, बैंक का पैसा भी गवर्नमेंट को ही जा रहा है। थिंक अबाउट इट। सो technically you are cheating on one part and not you can say paying on another part. You can't curb your wants for long. गवर्नमेंट के बहुत सारे पैरामीटर है, पैसा लेके आप अपनी वाइट इनकम अगर होएगी, आपके फॉरेन ट्रिप पे जाना वो नहीं जा सकते, उसके लिए भी लोन लेना पड़ेगा, पर्सनल लोन एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। थिंक अबाउट इट। नहीं तो आपकी 2 लाख से ऊपर एनुअल ट्रैवल में अगर एक बारी ऑफ कोर्स बाहर जाओगे तो कम से कम 2 लाख ट्रैवल तो, 2 लाख की कॉस्टिंग तो होती है। वंस यू स्पेंड 2 lakhs इन ट्रैवल, you are bound to file an ITR, you will get a love letter from income tax. Then who is responsible? So ये सब चीजें लोग सोचते नहीं है, सीखते नहीं है, एंड लॉट ऑफ टैक्स देंगे तो आपका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, योर मनी विल स्टार्ट ग्रोइंग। रिमेंबर दोज पीपल हु हैव स्टैक्स ऑफ मनी। 2010 में अगर 1,000 रुपए की वैल्यू 1,000 रुपए थी, 2020 में उस पैसे की वैल्यू 700 कुछ रुपए हो गई, 30% डेप्रिसिएशन हो गई। इमेजिन द रिवर्स, मेरा 10 साल, वो 2010 में वो 1,000 रुपया था, मैंने उसको ग्रोथ पे लगाया। टेक्निकली इन 10 years इन टुडेज टाइम्स इट ग्रोज अप टू 2.5 times, इफ नॉट 3 times, इट गोज अप टू 2.5 times। तो मेरा अंदाजा 2,500 रुपए बन गया, आपका 1,000 रुपया 700 रुपए बन गया, तो मेरा पैसा तो ऑलरेडी 3 गुना हो गया, 3.5 गुना आपके पैसे के हिसाब से। तो योर मनी इज लूजिंग ऑन बोथ द काउंट्स। आई एम गेनिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एप्रिसिएशन, यू आर लूजिंग बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द मनी। सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कम्स इनटू प्ले। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय आइंस्टाइन सेज कि दो कारें हैं, और सॉरी दो ट्रेन्स हैं, दे आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट 60 किलोमीटर पर आवर। पैरेलल जब होती है ना, तो पर्सन इन ट्रेन ए विल फील दैट पर्सन इन ट्रेन आई एम स्टेगनेंट, the train B is moving at a speed of 120 km per hour. This is theory of relativity simplified for you, given by Einstein. So ये theory of relativity appreciation and depreciation में act करती है। So वो पैसा जो आपके बेड में, बंकर में, कमोड में, टॉयलेट सीट में, सोफा में, जहां भी आपने रखा है, वो आपको पता है, और वो सड़ रहा है, वो किसी के काम नहीं आ रहा। इफ इट इज पुट टू यूज ग्रोइंग समवेयर इन द मार्केट, इट इज क्रिएटिंग अ फ्यूचर फॉर यू। हम लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारा फ्यूचर उस पड़े हुए पैसे से ज्यादा सेफ होगा, वो नहीं होता है। इफ यू गेट दिस पॉइंट, स्मॉल पॉइंट, आई एम श्योर यू वुड ट्रेड ऑन द राइट पाथ। इफ नॉट, of course you have idols around you who can you can say follow. The second query from you is, my annual gross receipt of practice are around 30 lakhs and I have a profit close to 20 lakhs annually excluding all expenses. What should be my strategy if I plan to go for a vacation of 10 to 12 days? Should I hire, should
Should five, shoal five. Okay. Should I hire associate or keep clinic off for such a long duration? I have fear of losing patients in case I keep clinic off for 2 weeks. I have been practicing in same place for last 14 years. Going routine dentistry, extraction, complete dentures, acrylic, TPD, okay, TPD or CPD, whatever. So root canals and metal ceramic crowns, scaling and disimpactions, no cases of ortho, implant and FMR in practice. See, if you have to grow in a certain manner in your life, you need to have your clinic which can go without you. So you need to have at least one associate, at least after 14 years of practice, at least one associate who can actually help you in guiding your practice in your absence. That means your clinic is totally dependent on you. कल को कोई ऐसा दिन आता है जिस भगवान ना करे आपको कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तब भी आपका क्लिनिक बंद रहेगा. Now you're thinking of going for a vacation because you're hale and hearty, probably young also. So 14 years of practice, I believe you should be less than 40 years only. So you're probably in that young phase, in young age. So if you are at young age and you're thinking of a vacation, how are you going to rejuvenate? That is the only thing you need to have clearly in your mind when you're thinking. And of course, there will be days, God forbid, आपका accident हो जाए, कुछ हो जाए, बीमार हो जाओ, hospital admit हो जाओ, dengue हो जाए. I'm not saying it, God forbid, if it happens, but if it happens, what are you going to do? Then there is no option. You have to shut down your clinic if you don't have a backup. Now, there will be days, कोई इंजरी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मेरा सुबह नहीं क्लिनिक जाने का दिल कर रहा, मेरा हेडेक है या नहीं है, आज नहीं जाना, आज कहीं जाना, बट यू हैव अपॉइंटमेंट्स केप्ट, बट यू हैव क्लिनिक टू गो, सो मन मारते हुए भी क्लिनिक जाना पड़ेगा. Think of long term. If you don't delegate your work in the early stage, you will have to do that all your life, and even when you're 60 plus, you will be having this problem at all points of time. So think about it. If you can understand what I'm trying to say, please go in for whatever I've advised you in the query number 1 and query number 2. I hope that answers your query. So query from New Delhi, India, number 148. Working since 12 years, definitely the work has increased, but what I can evaluate is net take home money is quite less as compared to experience. Tips, please. Want to invest money, but since our income is not fixed every month, it is difficult to decide what plan to choose. So it's not about the plan anyway. So working since 12 years, I have mentioned this point. There is a difference between experience and skill. People confuse white hair with you can say more work or more wisdom. Some of the stupid ideas come from white haired people, and I'm not saying everyone, I'm just saying in general, because वो mind होता है ना, बाल सफेद हो गए तो शायद wisdom की बात ही करेगा. It does not happen always that ways. So many youngsters can talk sense and instill those things, you can say talk about those things which can instill confidence in their abilities. So think about it. It is not about if you are having an experience and still net carry home money is there, what are the faults? Is it the lack of skill? It is the lack of visibility? Is it the lack of execution? It is the lack of patient satisfaction? It is the lack of outcome conveyed to the patient? What is at fault? आप दिख नहीं रहे हो, आप कर नहीं रहे हो अच्छा, आप चार्ज नहीं कर रहे हो proper, even that is one of the reasons. If any of those reasons is there, you are the one who can self evaluate and go about this task of finding the leaking bucket in your ship. So if you can find out that, then you can work on that. अगर आपको पता ही नहीं कि मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, भगवान बड़ा अनकाइंड है, मेरे को काम ही नहीं दिया, मैं घर कम लेके जाता हूं, मेरे से कम वाले लोग ज्यादा कमा रहे हैं, तो प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड, एंजॉयिंग विक्टिमहुड. प्रॉब्लम डालने से सोल्यूशन नहीं मिलता, प्रॉब्लम डाल के उसका सोल्यूशन सुन के अगर पसंद आए तो एक्ट करना होता है. मेरा नहीं पसंद आता, किसी और से पूछ लो. I'm the one who's answering your queries. Maybe I'm not sure how many have answered your query in this manner. So if you are, you can say, having a return out of it, think about it and do it. And of course, if you have unpredictable income, this is not kind of a plan, कोई एक fixed plan में नहीं डालना होता पैसा. It is divided into various heads. So if you are into my community for long, you must be knowing it. There is a systematic way of doing it. नहीं आता तो सीखो. प्रॉब्लम वही है, पैसा तो है नहीं है, इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? इन्वेस्ट करने को बोल दो, मेरे को तो पता ही नहीं है. So people will have answers for both the situations. अगर आपके पास दोनों चीजों के लिए आंसर है, तो फिर आपका आंसर भगवान के पास है, मेरे पास भी नहीं है. दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से. सो थिंक अबाउट इट. विच एवर सोल्यूशन अपील्स टू यू, स्टार्ट तो करो ना. बेसिक से स्टार्ट करना होता है. जाके पहली बॉल पे टेस्ट मैच की आप आगे बढ़ के छक्का नहीं ना मार सकते हो, ठीक है ना. सीमिंग कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना होता है. You can't hit McGrath or you can say Hazelwood or a Pat Cummins or a Mitchell Stark in the first over of a test match on a juicy pitch in Gaba for a 6. You can say ठीक है, सहवाग जैसा कोई पागल होगा तो कर भी देगा, but once maybe twice, तीसरी बॉल पे आउट भी हो जाएगा.
सो यू हैव टू रिस्पेक्ट द कंडीशंस. सो आप क्रिप्टो में जाएं, एग्रेसिव फंड में जाएं, उससे पहले बेसिक्स तो स्टार्ट करो. वेटिंग फॉर द राइट टाइम टिल इटर्निटी, इसी चक्कर में बीते बीते 2023 भी खत्म हो गया. कल को वो भी खत्म हो जाएगा. 24 शुरू होएगा, दिस टू शेल पास. 25 आएगा, दिस टू शेल पास. वो चलता रहेगा ये चक्र. 2023 में प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला था, उस वक्त मैं सुन लेता तो शायद हो जाता. वी देन स्टार्ट थिंकिंग बैक इन हाइंडसाइट. इफ यू डोंट फाइंड सॉल्यूशंस, योर चॉइस. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी. Query number 149 from Jodhpur, Rajasthan. How to get the money out of known patient's pocket? Convey it beforehand, give them clarity. As I said, known patient के चक्कर में ना हम लोग क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं. नहीं नहीं, पहले आप ये करो, पहले आप वो करो. मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम, अगर वो पेन में आया, तकलीफ में आया, चाहे ड्रेसिंग करनी है, चाहे कुछ करना है, ऐसा कोई काम कर दो जिसके लिए आपको कंसेंट की जरूरत नहीं है. वर्बल आप बता के क्लियर कर दो. देन हैव डायग्नोस्टिक सिस्टम सेटअप. सारा ट्रीटमेंट प्लान से बनाइए. नॉन पर्सन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्टकट्स मारेंगे. कंसेंट फिर भी लेनी है, ट्रीटमेंट अप्रूवल फिर भी लेना है, मेडिकल हिस्ट्री फिर भी लेनी है. ऑल दीज थिंग्स विल बी डन. ऑफ कोर्स व्हेन यू डू ऑल दीज थिंग्स, इफ आप तरीके से ले रहे हो तो कंसेंट में आपकी पेमेंट भी ऐड होगी, ट्रीटमेंट अप्रूवल में आपकी पेमेंट भी ऐड होगी. अगर कहीं शॉर्टकट नहीं मारोगे तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा ना. अगर शॉर्टकट मारोगे, चलिए नॉन पेशेंट है, नॉन पेशेंट ही सी और डी पेशेंट होता है. डेल क्रिब ऑल्सो, वो तो वहां पे इतने में हो जाता है, हमने आपने इतने में करवाया, नो प्रॉब्लम. डेंजरस, तुमने मेरा रिश्तेदार होकर नुकसान किया, लेट मी पुल यू बैक इनटू द कंज्यूमर कोर्ट. तो ये नॉन पेशेंट्स हैं जो ये सीओडी कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं. सो ऑलवेज कन्वेट बिफोर एंड, थोड़ा सा काम करके, जो भी ड्रेसिंग टाइप, आई एम नॉट सेइंग एक्टिव प्रोसीजर, थोड़ा बहुत करके उसको डाल दो, उस पर कन्वे करो. ज्यादा से ज्यादा क्या लूज करोगे? 200 400 500 रुपए कंसल्टेशन, यही लूज करोगे ना नॉन पेशेंट में. अगर आप क्लैरिटी दिया, बी वेरी प्रोफेशनल. बिजनेस है भाई, बिजनेस है. इतना है हमारा टोटल चार्जेस जो हम नॉर्मल पेशेंट से करते हैं एज ए क्लिनिक पॉलिसी. अगर आपकी है तो मैं रिलेटिव्स को 10%, 15%, 20% जो भी देता हूं. आपकी क्लिनिक पॉलिसी जो भी कहती है आप दीजिए, बोले इतना चार्ज होगा. गिव देम क्लैरिटी, लेट देम मेक एन इन्फॉर्म चॉइस, करवाना कि नहीं करवाना, क्योंकि आपने करने से पहले बताया. करने के बाद बताएंगे कि इतना बिल बना दिया आपने, नॉन पेशेंट को लूटते हो. तो ऐसे जब पार्टी में मिलेंगे वो आपसे कन्नी काटेंगे, आप उनसे कन्नी काटोगे. लेकिन 200 400 500 का काम किया होगा तो आपका हेड ऊपर होगा कि मैंने तो बोला था, मैंने तो काम कर भी दिया, मैंने उस दिन के पैसे भी नहीं लिए, अगले के बता दिए इनको तो पैसे का था, सस्ते वाले से कराना, करा लो. शादी में अगली बार मिलेंगे ना आपको, तो वो आपसे करनी काटेंगे, आप नहीं काटोगे. आप आंख में आंख देख के बात करोगे. सो डोंट बर्न योर सेल्फ कि आप पूरा काम करो देन एक्सपेक्ट द मनी. डू लिटिल वर्क, अगेन नॉट यू कैन से अमेनेबल टू कंसेंट, जिसमें कंसेंट इन्वॉल्व ना हो, वो ना करो. एंड वंस दैट हैपेंस, कन्वेड. And if people are happy to, you can say, buy your services, and again the sky is the limit, you can say. So I hope I have answered your query. So query number 150 from Zirakpur, Punjab. I've been practicing for 15 years, and in these 15 years, I've built a name in my area, also good reputation. Earning is also increasing with time. That's good. But I'm not able to build myself a good money bank where I can say that I have ample amount of savings. I've been trying to build my money, but one or the other need comes up. These needs cannot be overlooked or excused. I have no regret pursuing this profession, nor do I have any grudge or any bad feelings for any of the dentists working in my area. That's super. So I'm a sort of a silent practitioner focused on my own work, just continuation of the above answer. So I would say if you have built up your name, it is time to actually make use of the brand that you have built up. Make more people known about it. Use your Google reviews, use your testimonials, use your feedback that you have gathered from your patients. If you have not, and if you believe you have good amount of patients, approach them, get back to them. 10 लोगों को बोलोगे तो 2 का feedback आएगा. That is how the society works. So people don't give positive things out easily. Negative बोलने को बोलो ना तो 10 में से 12 लोग देंगे आपको negative feedback. That is how it works. So we all you can say appreciate negativity, but किसी को बोलो अच्छा काम किया तो यार लिख के दे दो, कोई टेस्टिमोनियल दे दो. हाँ देता हूँ, बनाता हूँ, थोड़ा वेट कम कर लूँ, थोड़े बाल ठीक हो जाएं, थोड़ा पिंपल कम हो जाए. All those reasons are always there to give a feedback. And once we give a feedback, use those things. Have a before after cases. You must be doing good work, so you must be having good before and after cases. Use them on your website. Increase your social media presence. Have a validation point. Once you have that, go in for paid marketing, and then these things are going to boomerang for you when they happen in you can say in unison. When they happen totally, they'll be giving you certain amount of return that you can also expect कि हाँ अच्छा है, अब मेरा काम अच्छा है, मेरे को return आ रही है, and I can do that. But yes, 15 years means I would say you must be close to 40.
plus minus 2 years. So if you have not started out on the investment journey, I must tell you, you are already halfway through of your practice journey. उसके बाद आप करते रहो, वो आपकी अलग चॉइस है, but I believe that 25, 28 to 30 years is the, you can say, active lifespan of a dentist. उसके बाद आप करते रहो मजबूरी में, कि हमारे पास फीड करने को कुछ नहीं है, कोई है नहीं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी जोड़ना है, बच्चों की शादी के लिए भी जोड़ना है, ऑल दोज नॉर्थ इंडियन नीड्स स्पेशली. सो स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम जीरकपुर, आई कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. सो अगर वो चीजें मन में आती है तो फिर आपको 55 के बाद भी काम करना पड़ेगा. एंड इफ यू आर गोइंग दैट, यू नीड टू बिल्ड अप समथिंग फॉर योर रिटायरमेंट ऑल्सो. आपको ये याद रखना है कि आपको कोई पेंशन नहीं मिलनी है, ठीक है ना. आप चाहे कॉलेज में भी होगे, सरकारी में तो बात अलग है, प्राइवेट कॉलेज में भी काम करते तो आपको पेंशन नहीं मिलनी है. आई होप यू आर फुल टाइम प्रैक्टिशनर फ्रॉम योर, यू कैन से, वर्ड्स आई कैन मेक आउट, यू आर फुल टाइम प्रैक्टिशनर. तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलनी है. पेंशन नहीं मिलनी है तो व्हाई आर यू नॉट सेविंग फॉर योर फ्यूचर. फ्यूचर में आप किससे एक्सपेक्ट करोगे? गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा, क्या लो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिलेगा, आपके क्लिनिक से नहीं मिलेगा, बच्चों से उम्मीद ना रखो. दैट इज द ओनली थिंग. अपनी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है. दे हैव टू मैनेज देयर ओन मनी. बुढ़ापे में किसी ने आपके हाथ में फंड नहीं देना, आपको अपना इंतजाम खुद करना है. वी आर नॉट लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा और वेस्टर्न वर्ल्ड कि हमारे को कोई सोशल सिक्योरिटी मिलेगी. सो थिंक अबाउट इट, प्लान फॉर योरसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स taxation is the only way to go for from investment onwards. So if you can learn taxation first and banking first, then you can go in for investment. Investment without the knowledge of taxation is absolutely a zero concept. जिसको नहीं आता वो blindly invest कर ही जाएगा without even understanding invest. People ask me, मैंने सारा कुछ म्यूचुअल फंड में डाल दिया, मैंने डिजिटल गोल्ड ले लिया. क्या कर रहे हो? अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हो. द रिटर्न्स में से वो कम हो जाएगा आपकी. So why even think of those things? So I'm glad that you don't have any grudge towards the profession. It is very rare to find people in today's time जिनके पास बिल्कुल qualification ना हो in subject J and BB, subject jealousy and subject backbiting. You are a failure in these two subjects, and I really appreciate that you are a failure in these two subjects, because most of us are postgraduates, even PhD in these two subjects, J and BB, jealousy and backbiting. So I hope that answers your query. So query number 151 from Pimpri, Maharashtra: how to manage clinical financial record at reception as well as for dentists, because I'm not able to manage monthly income, expense, and more, even about business growth, whether it is at a break even or in profit loss. देखिए, आपको आता नहीं आता ये एक अलग एस्पेक्ट है. आपको गवर्नमेंट के एंड से आपका इनपुट ऑफ इनकम रखना इज मैंडेटरी. गवर्नमेंट एंड से मैंडेटरी है, आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी मैंडेटरी है, सिविल हॉस्पिटल सिविल सर्जन की तरफ से भी मैंडेटरी है. अगर आप इनपुट ऑफ इनकम नहीं रखते हो तो एक्चुअली यू कैन से एथिकल में भी जाते हो और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से भी आप गलत मोड में जाते हो. सो यू नीड टू नो दैट. आप इनपुट का रखोगे, एक्सपेंसेस का तो हर बंदा हिसाब रखता है कि मैंने यहाँ खर्चा किया, तो इनकम का हिसाब नहीं रखते, तो फिर प्रॉफिट कहाँ से हिसाब होगा? तो मेंटेन एन इनपुट ऑफ इनकम सोर्स लाइक अ फॉर्म 3C काइंड ऑफ अ थिंग यू नीड फॉर दैट. 2020 में जून में मैंने अंडरडॉग यूडीएस, अंडरडॉग डेंटिस्ट स्क्वाड एक ग्रुप था, उनके साथ 4 वीडियोस किए थे, 4 या 5 किए थे इनफैक्ट. सो उसमें से दूसरा वीडियो था फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग. गो ऑन माय यूट्यूब चैनल, यू विल फाइंड द वेज हाउ टू मेक बिलिंग, हाउ टू डू दीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कैसे एंट्री सिस्टम करना है इन शॉर्ट सिस्टम. इन शॉर्ट यू विल हैव दैट. 2020 की जून का वीडियो है, हम 23 के एंड में, 3.5 साल हो गया, और ग्रुप में कितनी बार ये डिस्कशन होती है. तो if you don't open up the group, if you don't ask your queries, if you don't post your queries, how is somebody going to help you? Ask yourself. So is there anything like we can provide patients no cost EMI like system for dental treatment like Bajaj Finance, but it is limited to metro cities? So what can tier 3 dentists do for this type of payment options? Simply saying, you have to put it forward. You have to, you can say, act as a facilitator. I'm not sure how many service providers will be willing to offer that in a tier 3 city, but then I believe एक tier 3 वाला is like a village, और विलेज का पेशेंट ज्यादा लॉयल होता है. इवन आई हैव सम टाइम विलेज पेशेंट. शहर वाला पेशेंट चिक चिक करे ना करे, विलेज वाला आके ना काउंटर पे 50,000 रखता है, बोलता है ये रख लो, सारा काम करना है, जितना हो गया अगली और देना होगा तब बता देना. दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. So I don't think there is an affordability problem. Of course, if your target group is wrong, maybe you are facing this problem, but you are not the one who is supposed to provide these facilities. You may search out for that in your area, which are the options available, because if some options are available in Punjab, I'm not sure that will be available in Maharashtra as well. So think about these things and find out these things. If they are available, act as a facilitator where you get the money upfront, and of course the patient can do that. अब इसके लिए ज्यादा क्रेडिट कार्ड पे ऑप्शंस आती हैं बहुत सारी, बट आई एम नॉट श्योर इवन टियर 3 में लोग क्रेडिट कार्ड भी यूज करते होंगे कि नहीं.
सो डिजिटल कोड्स में भी बहुत सारे कईयों ने शुरू कर दिए ऑप्शन कि डिजिटल कोड पे आपकी पेमेंट ईएमआई टाइप हो जाती है. अगेन, नॉट अ वेरी प्रेवेलेंट सिस्टम इन टीयर 3. So find out, you may find an option, but if not, then it's better that you search out for good options in your in the way that somehow, somewhere, you strike a balance between patients paying you and they not feeling burdened as well. So I had taken a loan for my clinic setup. Is it advisable to prepay the loan bank, because bank primarily puts installment amount in interest amount rather than principal amount? So is there any specific period after that we should start putting extra money in the loan account and start prepaying the loan that benefits us? Please share your thoughts. Yes, if it is there in your clause, when you taken a loan, usually pre-payment closure clause hota hai. Pre-closure clause means you want to close the loan before the scheduled time, then you start paying a little extra for that. वो आपकी कैलकुलेशन करके आपका वैसे भी रिड्यूसिंग लोन होता है, तो ऑलवेज अगर आप ज्यादा देते जाएंगे तो आपका बैलेंस कम बचेगा, तो आपका ईएमआई का इंटरेस्ट ऑलरेडी कम होता जाएगा. ऑब्वियसली थोड़ा सा कई बार होता है सिर्फ 10% बढ़ाने से. जैसे आपका हाउसिंग लोन है, लेट्स फॉर एग्जांपल फॉर 25 ईयर्स, अगर 15 साल या 12 साल के बाद आप सिर्फ 10% हर महीने ऐड करते हैं, तो समटाइम दैट लोन कैन फिनिश इन 18 to 19 ईयर्स. 6 या 7 साल का बेनिफिट हो जाता है जो आपने एक्स्ट्रा ईएमआई देनी है. सो जस्ट बाय पेइंग 10% एक्स्ट्रा. ऑफ कोर्स दीज कैलकुलेशंस आर वर्केबल डिपेंडिंग अपॉन द टर्म, यू कैन से साइज, कि आपका कितने साल का लोन है, कितने अमाउंट का लोन है, कितने परसेंटेज का लोन है, और अगर उसमें प्री क्लोजर है कि नहीं है. कई बैंक का प्री क्लोजर के साथ साथ पेनल्टी क्लॉज भी होता है कि आपको 1% 2% पेनल्टी देनी पड़ेगी. बट मोस्ट ऑफ द बैंक्स, अगर आपका लॉन्ग टर्म लोन है तो 10 साल के बाद मोस्ट बैंक्स का प्री क्लोजर पेनल्टी नहीं होती है. बट अगेन, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, व्हाट इज देयर इन योर क्लॉज. इट्स नॉट यू कैन से अ वन रूल दैट गवर्न्स ऑल और वन शू साइज दैट फिट्स ऑल. सो चेक आउट फॉर योर डॉक्यूमेंट्स, आपके में प्री क्लोजर क्लॉज है कि नहीं है. सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेरी. Query number 152 from Bengaluru, Karnataka. What is the normal percentage the financial consultants get when we do the MF regular through him compared to direct MF option? जब आप इन्वेस्ट करते हो तो बहुत छोटी सी परसेंटेज फर्क होती है, पॉइंट समथिंग. बट इन द लॉन्गर रन, इफ यू कीप दैट मनी फॉर 15 to 20 years, लाखों में फर्क आ जाता है वो रेगुलर म्यूचुअल फंड का और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का. सो इवन इफ यू आर डूइंग थ्रू एन एजेंट, अगर वो फंड आप ट्रैक कर रहे हैं, अच्छी रिटर्न दे रहा है, तो you can say stop your SIP and restart that SIP in the direct mode directly from the fund house. You can say enabling the same in your net banking. It's a very, very simple process. So it does matter, and it is not it is negligible when you are paying it. But if you keep that money for 15-20 years, it is going to be a huge bomb. And sometimes अगर आपकी सिर्फ 5,000 की भी सिप है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5,000 की सिप है, मोटा मोटा 15 से 16 साल अगर आपने रखा है, 5,000 पर मंथ की सिप, साल के 60,000, आफ्टर 15 ईयर्स आपको कम से कम 3.5 से 4 लाख का फर्क पड़ेगा. इफ यू आर रेडी टू बियर दैट लॉस, ग्रेट, गो अहेड. इफ नॉट, स्टॉप द सिप विद एडवाइजर. उसी फंड में दोबारा खुद से डायरेक्ट एडवाइस कर लो. नहीं आता, सीख लो. देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग कर्व. सब कुछ तो सब इंसान पैदा सीख के पैदा नहीं हुए होते. So yes, I see few queries on Facebook group also. Don't worry, I'll take up the queries, Facebook friends. I'll take up those queries after I'm done with the, can say, near the schedule time. So query from Ahmedabad, Gujarat, 153, to decide proper time of investment and proper fund stock where to invest. There is no time. Only two people know the correct timing. One of them is God and another one is a liar. Jhoota. तो झूठी में मक्कार वाला झूठा. So remember that if you are waiting for the correct time to invest, there will never be a perfect time. Every time is a good time to start, because हर चीज की इन्फ्लेशन होनी है. ठीक है ना. आज आप घर बेच दो, कार बेच दो, कार खरीद लो, फोन खरीद दो, फोन बेच दो, एंड यू विल ऑलवेज गेट समथिंग हायर और लोअर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट. वो साल बाद, 2 साल बाद वो चीज होएगी, लेटेस्ट आएगी, मॉडल आएगा, अलग आएगा, कॉस्टिंग फर्क पड़ेगी. देयर विल नेवर बी a, और प्रॉपर फंड स्टॉक. अगेन, बिफोर इन्वेस्टमेंट हैव अ नॉलेज ऑफ टैक्सेशन. आपको कोई ये चीज नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ. लोग सीधा बोलेंगे अच्छा इस म्यूचुअल फंड में लगा दो, उस इन्वेस्टमेंट में कर लो. टैक्सेशन सीखनी बहुत जरूरी है. आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई एम डूइंग अ वर्कशॉप. आई डू अ वर्कशॉप ऑन इन्वेस्टमेंट आल्सो. वो टैक्सेशन इन्वेस्टमेंट कंबाइंड वर्कशॉप है मेरी. इट्स नॉट दैट ओनली टैक्सेशन इज बीइंग लर्नड इन देयर, बट इट्स नॉट दैट आई एम टीचिंग इट. सो आई एम सेइंग इट बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड बाय गोइंग थ्रू द ग्राइंड ऑफ ऑल दीज years, and with the help of my dad, I have learned these things in a very, very hard way.
ये टैक्सेशन इज द बेसिक्स, हम लोगों को पता ही नहीं है, ना कोई बताता है ये चीज। सीधा बोलते हैं यार कहाँ इन्वेस्ट करो, चल यार यहाँ कर दे, म्यूचुअल फंड सही है, सही है यार, सही है यार, सही है यार, देख के ऐड एंड वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग ओनली म्यूचुअल फंड्स। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। सो देयर इज नो प्रॉपर टाइम एंड देयर इज नो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट। यू नीड टू बैलेंस योर इंस्ट्रूमेंट्स in different categories. All eggs are never to be put in one basket. Respect that. So I hope that answers your query. So query number 154 from Narayangarh, Haryana. As I'm practicing in a small town, so it is very difficult to convince the patient for treatment. Patients are only concerned about the cost factor. Change your target group. Be more visible, have more leads in hand, have consistent pipeline of leads where you can command that who you are going to treat. If you are like a beggar, of course, don't take me wrong, if you are like a beggar, you can't be a chooser. So if you have a limited OPD, you will have to treat from what you are getting. But if you have a consistent pipeline of leads via increased visibility, then you can command whom to treat, whom not to treat. It's your choice. It's your choice. Then people will vie for a queue to get treated from you. But yes, having said that, a good domain skill, good dentistry skill, being a skillful dentist is more important. डेंटिस्ट की कमी नहीं है अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अस, हालांकि मैं मानता हूं कि अभी भी कम है डेंटिस्ट, बट एनीवेज डेंटिस्ट की कमी नहीं है, स्किलफुल और अच्छे डेंटिस्ट की कमी है. But understand that if you are not amongst that, firstly improve your skills, go in for more visibility, document your cases, be present online, be present on social media, do, you can say, have a set a validation point, go in for good patient reviews and testimonials, put them on Google and on your website, double that up so that they come in the SEO easily. And of course, once they are in the SEO easily, then you can go in for performance marketing so that you bear the results from there as well. I hope that answers your query. So query from Amritsar, Punjab, number 155, investments from clinic income and salary, which is the best for me and what time? Everything is best for you. Everything is, you can say, is best at any given point of time. You need to have a debt, you need to have a hybrid, you need to have a hedge, you need to have a equity, and you need to have a HESBA in your portfolio. As simple as that. Keeping a check on the investments. Invest करोगे तो ट्रैक करोगे ना, इन्वेस्ट करो तो सही, पहले ट्रैक तो बाद में करना. फिक्स को ट्रैक नहीं करना, एनपीएस वाले खुद मेल भेज देंगे, कैश वाले भी खुद मेल भेज देंगे, इक्विटी वाले. हेज को ट्रैक नहीं करना, ऑटोमेटिकली जो मिलेगा इट विल ग्रो ओनली. सो अंडरस्टैंडिंग द चेंज इन टैक्सेशन लॉज, लर्न इट, लर्न द टैक्सेशन प्रॉपरली. चेंज होते हैं हर साल चेंज होते हैं, चाहे थोड़े से चेंज हो, मैसिवली चेंज नहीं होता, लेकिन लास्ट ईयर इट वाज अ मैसिव चेंज. द डिफॉल्ट स्कीम वाज चेंज फ्रॉम ओटीआर टू एनटीआर. ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम अब डिफॉल्ट है. अब आप इनकम टैक्स भरने लगोगे तो आपको ओटीआर सेलेक्ट करनी पड़ेगी. एनटीआर ऑटोमेटिकली फीडेड हो गया, आपने करनी है नहीं करनी है. अब ओटीआर एनटीआर में फर्क क्या होता है? एनटीआर में आपको डिडक्शंस नहीं मिलती हैं जो आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट हैज थॉट अबाउट इट कि लोगों ने टैक्स तो देना नहीं है, तो ये पैसे जमा करके रख रहे हैं, तो लेट्स नॉट डू दैट. उनको थोड़ा इंसेंटिव दो कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो न्यू टैक्स रिजीम में आ जाओ, कोई टैक्स मत दो, सॉरी लेस टैक्स दो कंपैरेटिवली, कोई इन्वेस्टमेंट मत करो, अपना खुद देखो. कंज्यूमरिज्म इज टू बी प्रमोटेड. दिस इज हाउ द एनटीआर केम इनटू बीइंग. और ये सब हम लोगों की गलती है. जब 2% लोग टैक्स भरेंगे पूरे इंडिया में, 6% लोग आईटीआर भरेंगे, तो ये चीजें होनी ही होनी है. रिमेंबर 94-95 मेजोरिटी होता है, हम लोग माइनॉरिटी में. हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि हम लोग टैक्स देते हैं तो हमें ये मिले ये मिले ये मिले. यस, इट शुड बी देयर. आई बिलीव टैक्स पेयर शुड बी ऑनर्ड. टैक्स पेयर्स को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसको देख के बाकी लोग आएंगे. इनफैक्ट आई पोस्टेड दैट आइडिया मल्टीपल टाइम्स वाया ईमेल एंड ऑन ट्विटर एज वेल, बट somehow it has not reached the right ear so far. I believe that I'll keep on doing it. कभी ना कभी तो पहुंचे. इनकम टैक्स पेयर को तो एटलीस्ट सिक्योरिटी मिले. इनकम टैक्स फाइलर को नहीं मैं बोल रहा, इनकम टैक्स पेयर को बोल रहा हूँ. ठीक है, फाइलर को भी कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, बट एटलीस्ट जो 94% लोग नहीं करते हैं उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए. यस, अनलेस दे आर फ्रॉम द बीपीएल कैटेगरी, उनकी बात अलग है. पर जो रिच और यू कैन से रिच एग्रीकल्चरिस्ट हैं, या जो रिच कैटेगरीज में है, डिफरेंट कैटेगरी में, दोज हु आर नॉट पेइंग टैक्स, they should not be given any incentive from government in any part unless they come into the taxpayer thing. तो गवर्नमेंट चेंज करेगी तो ना, तो बात वही है. अगर हम लोग कम करते जाएंगे तो व्हाट विल गवर्नमेंट कीप ऑन डूइंग इज डिस्करेज डायरेक्ट टैक्स लॉज. धीरे धीरे डायरेक्ट को करके इनडायरेक्ट को बढ़ाती रहेगी. फिर हम कहेंगे, कंप्लेन करेंगे, देखो जी 4 मीटर से नीचे वाली गाड़ी पे 12% टैक्स है, 4% से थोड़ा सा ऊपर मेरी गाड़ी गई है, मेरा 28% टैक्स है. दिस इज हाउ थिंग्स विल कीप ऑन चेंजिंग. So understand this thing. The changes will come from us only. Unless we change our thought process, things are not going to work. I hope this answers your query.
सो क्वेरी फ्रॉम 156 फ्रॉम उल्लासनगर मुंबई महाराष्ट्र। उल्लासनगर से बहुत सारी क्वेरीज हैं। सो पेशेंट्स ऑलवेज बार्गेन कंपेयरिंग अस टू अदर डेंटिस्ट, इफ वी डिक्रीज रेट्स एज दे से लेस क्वालिटी, तो नहीं होगा ना। सो वेरी फ्यू ऑल पेशेंट्स न्यू पेशेंट्स से चार्जेस वी डिक्रीज देन दे डाउट अस, टू मेनी क्लिनिक्स इन द सेम एरिया। सो कहानी घर घर की, कहानी सास बहू की, वही सेम लॉजिक। पेशेंट्स विल बार्गेन। इफ यू are not working on fixed charges, then you are at fault. You are digging a grave into your future. You are digging out something from your future. You need to understand that you don't do it. एंड लॉयल पेशेंट्स के लिए भी क्यों कम करो, एक सिमिलर स्ट्रक्चर पे काम क्यों नहीं कर सकते हम लोग। सिर्फ यही है कि वो अप्रोच आपकी जो है क्राइम मास्टर गोगो की है ना, आया हूं कुछ तो लेकर ही जाऊंगा, दैट अप्रोच की कोई भी पेशेंट आया है कुछ ना कुछ देकर ही जाए। डोंट डू दैट। हैव अ 72% ऑफ कन्वर्जन रेशियो इन योर माइंड। अगर कन्वर्जन रेशियो माइंड में नहीं होएगी ना, तो हर पेशेंट आपको अपना पेशेंट लगेगा। सो थिंक ऑफ दैट यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योरसेल्फ इन दैट रिगार्ड. So I hope that answers your query. Too many clinics in the same area is not a problem. It's good that too many clinics are there, too many good clinics are not there. Too many dentists are there, too many good dentists are not there. How about your niche? Be a skillful dentist. Experience की बजाय सफेद बालों की बजाय skill की तरफ ध्यान दो. If you have more skill, you will get more dentist. You will get more work, and of course you'll be known. And it's not about कि वो work बहुत अच्छा काम मिला तो फिर उसको करो. You still have to document it. सब काम खुद नहीं करना है. यू हैव टू लर्न टू डेलीगेट अ फ्यू थिंग्स. यू कांट बी सुपरमैन ऑलवेज, एंड इफ यू आर, यू कैन से आफ्टर अ टाइम यू विल, यू कैन, सुपरमैन भी थक जाता है. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव समवन यू कैन डेलीगेट, अदरवाइज योर हेल्थ विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. इफ यू वांट टू लिव अ हेल्दियर लाइफ एंड लाइफ rather than a or life, so think about it very very clearly. So I hope that answers your query. So query number 157 from Ahmedabad, Gujarat. Patients don't come for the first appointment given by us. Patients tell treatment charges are very costly. How to make big ticket treatments? जब तक आप कमी उनमें निकालोगे तब तक आपके सिचुएशन इंप्रूव होने के चांसेस कम है. हो भी सकती है बट देर आर लेसर चांसेस. सो इफ द पेशेंट्स डोंट कम ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट बिकॉज यू हैव नॉट सेट अप द अपॉइंटमेंट system clearly, and if the patients are telling treatment charges are costly, then your most of the patients are C category patients. Aim for A category patients. Big ticket कहां से आएगा? अगर स्मॉल टिकट के लिए लोग आपको कॉस्टली बोल रहे हैं तो बिग टिकट के लिए तो कॉस्टली बोलेंगे बोलेंगे. तो आपको पहले अपना नाम क्रिएट करना है एंड डॉक्यूमेंट करना और उसको बैकअप करना आपके गूगल रिव्यूज और फीडबैक से. अगर आपके पास वो वैलिडेशन पॉइंट नहीं है, टुडे पीपल आर वैलिडेशन सीकर्स. अंडरस्टैंड दिस थिंग. मेंटालिटी पोस्ट कोविड चेंज हो गई है. सारी दुनिया अब मोबाइल फोन पे आके सिमट गई है. मोबाइल फोन से सब सर्च होती है. कुछ नहीं आता, लेट मी आस्क गूगल व्हाट इट इज. सो पीपल सर्च एवरीथिंग फ्रॉम द सेल फोन. इवन एक छोटे से गांव में भी सर्च सेल फोन से शुरू होती है. सो अनलेस और until you realize the importance of that, you are not going to respect the change times. You will continue to live in the pre-COVID era. I call that pre-COVID era only. हम लोगों ने एडजस्टमेंट की है, हम लोगों ने चेंजेस की है. मेरे जैसा लोग कभी जिंदगी में फोटो नहीं खिंचवाता था, बट आई एम देयर इन द फ्रंट ऑफ द वीडियो डूइंग दीज थिंग्स रेगुलरली. 274 नंबर वेबिनार है मेरे. फिजिकल शायद 114-15 हुए हैं, 115-16 हुए हैं शायद. इन स्टार्टेड इन 2007. 2023 के एंड तक 116 किए हैं मैंने फिजिकल वर्कशॉप्स. ठीक है, वो 2-3 दिन वाली को एक ही गिनते हैं हम लोग. इसमें भी चलो 1 घंटे वाला भी एक है, तो एक 3 दिन वाली भी वर्कशॉप एक ही नहीं जाएगी. बट दिस इज हाउ थिंग्स आर. ये मैंने 3.5 साल में, 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा, प्रॉब्ली 3.25 साल कह सकते हो आप. 3.5 साल 3.25 साल में 274, कल 275, 273 है, 74-75 कल हो जाएंगे. 350 कर लिए. 350, एंड मोस्ट ऑफ देम आर वेबिनार्स. मैं छोटे वीडियो जो बनाए अनगिनत उनकी बात नहीं कर रहा. 800-900 वीडियो यूट्यूब पे है. तो कहां से आया? by getting over the fears in the post covid era. So if you can't get over your fears, if you continue to do the same things, you will get same results. Same things, same results. Different things, different results. As simple as that. तो पॉसिबल बिग टिकट के लिए तभी होगा अगर आपके पास स्मॉल टिकट के लिए वैलिडेशन आएगा कि नहीं यार ये डॉक्टर अच्छा काम अच्छा करता है. लेट मी जस्ट, यू कैन से वैलिडेट दिस पॉइंट. सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेरी. Query number 158 from Panchkula, Haryana. Advanced tax is paid always, but at the end of the year, there is always a disparity, either paid extra or less, in spite of regular interaction with CA and exchange of statements. See, advanced tax is always usually paid based on the previous year benchmark.
तो आपका पिछले साल में जैसे मान लीजिए 10 लाख की इनकम के ऊपर, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 लाख की इनकम के ऊपर आपने एडवांस टैक्स पे किया। अगर इस साल आपकी इनकम 8 लाख हुई, अगेन एग्जांपल ओनली, 8 लाख हुई या 12 लाख हुई, एग्जैक्टली सेम इनकम तो नहीं होती ना, तो एडवांस टैक्स से फर्क पड़ेगा। इट इज ऑलवेज बेटर टू पे ऑन द ओवर साइड। ओवर देंगे तो गवर्नमेंट विल पे यू बैक विद इंटरेस्ट, 1% सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ से आपको वापस मिलेगा। ये नहीं है कि आपको वो उस चीज की कोई पेनल्टी पड़ेगी, रादर गवर्नमेंट आपको पेनल्टी के साथ वापस करेगी। सो कम दिया ज्यादा दिया नहीं, ऑलवेज पे ऑन द हायर साइड। There's nothing wrong in paying on the higher side. So and you can't blame your CA for that कि आपके नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ये मैनेज कर सकते हैं तो आप ये चीज सीख लीजिए। It's not that difficult for a clinician like us. Presumptive taxation is the easiest thing to do. You can do it yourself, manage it yourself, pay your advance tax yourself. तब आपको पता लगेगा कि CA कितना एक्यूरेट था और आप कितनी एक्यूरेट है। Because you see, जो presumptive फॉलो करते हैं ना, मैं तो ये सिंपल बोलता हूँ, आप साल के 350th डे को एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं 15 मार्च को। साल के 15 दिन बचे हैं आपके लिए, बिकॉज वी हैव टू टेक फाइनेंशियल ईयर इनटू अकाउंट। 350 दिन के बाद आपको अगर पता नहीं होता आपकी इनकम कितनी है, तो गलती आपकी है कि सीए की है। सीए को एक्सचेंज करने को देरी स्टेटमेंट्स का मतलब थोड़ा ना कि वो कैलकुलेट करेगा। आप बताओ कि पिछले साल हमने मेरी 350वें दिन को इतनी इनकम थी, आज मेरी 350 दिन पे इतनी है, मेरे को एक्सपेक्टेड है मेरे ये केसेस चल रहे हैं अगले 15 दिन में 1 लाख 2 लाख 3 लाख वट एवर द अमाउंट इज गोइंग टू कम, ये करके हिल कैलकुलेट एंड पे इट ऑन द हायर साइड। आपकी कम्युनिकेशन में कमी हो सकती है, इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन, अगर हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें। बहुत बारी हम लोग सीए को भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, बिकॉज हमें लगता है उसको पता लग गया कि हम इतने कमाते हैं तो दे विल ओवर चार्ज अस। दैट इज अवर माइंडसेट। सो अगर साल के 350 दिन में भी एडवांस टैक्स देके अगर आपको बहुत ज्यादा और बहुत लेस हो रहा है, तो फिर ये गलती प्राइमरली आपकी, आपकी सीए की नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपने एक्यूरेटली कन्वे किया है, in spite of that CA has done a mistake, and time to change your CA. So either upgrade yourself, learn these things, or change your CA. That is the only option for you. Trust me, I'll give you a personal example. मैं हमेशा एडवांस टैक्स ओवर में देता हूँ। वापस आ जाए अच्छा लगता है कि रिफंड आया है, ना होए देना पड़े तो विद पेनल्टी देना पड़ता है, चाहे पेनल्टी बहुत थोड़ी सी होती है। आई डोंट वांट एनीथिंग टू रिफ्लेक्ट इन माय 234 ABC। मेरे को अच्छा नहीं लगता, वो फालतू का मनी है। आप लोगों को जो नहीं पता है, आप अपने पिछले साल की ITRs खोलिए, उसमें एक सेक्शन होगा 234A B C, जो भी आप लोग हैं। इसके बाद अगर आपको एक्सेस है आपकी ITR पे, देखिए 234 ABC में आपने कितना पैसा गवर्नमेंट को फ्री में दिया है, और कितना पैसा अगर दिया है इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड सीए, तो आपका सीए घट गया है। अब सीए चेंज कीजिए या अपनी सोच बदलिए, आप खुद ये काम कीजिए। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इज लाइक यू कैन से, आई वुड से चौथी पांचवी के बच्चे का काम है। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो देन देर आर फार मोर कॉम्प्लेक्स इन डेंटिस्ट्री दैट यू नीड टू डू। सो साल के 350 दिन बाद my advance tax is usually in a appropriate range, give or take 4-5% plus minus. That is okay. That is unless I have a windfall of income the next 15 days, which is rare. Unless I have, you can say, payments which get carried over to the next year, again that is also very rare. So आपकी range सही रहनी चाहिए, should not be an exact range. But interaction कितना है CA के साथ, communication कितनी है, या CA कितना capable है, those are the two things you need to work out. I hope that answers your query. Wow, again from Ulhasnagar. Query from Ulhasnagar, Mumbai, Maharashtra. Query number 159. Patients always feel dental treatment is expensive. पेशेंट्स को ऐसा लगता है, तो पेशेंट्स को ऐसा ना लगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको बताना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा। उनको बताएगा कौन? आप। गवर्नमेंट थोड़ा ना बता के नोटिस लगाएगी सिनेमा घर में कि हाँ जी डेंटल ट्रीटमेंट महंगा है, इस डेंटिस्ट के पास मत जाओ, इस डेंटिस्ट के पास जाओ। इट डज नॉट वर्क दैट वेज। सो इफ वी सिंपली गिव दिस रीजन, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पेशेंट्स। तो भाई अवेयरनेस कम है तो अवेयरनेस करेगा कौन? हम ही करेंगे ना, हम ही करेंगे अवेयरनेस। तो फिर देन अगर आप नहीं करेंगे तो whom do you expect to do it? सो अगर पेशेंट को लगता है तो उसके माइंड के नोशन कॉबवेब्स रिमूव करना आपकी जिम्मेवारी है, आपकी ड्यूटी है। अगर आप नहीं कर रहे अपनी ड्यूटी, देन भगवान भरोसे काम है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी। Query from Navi Mumbai, Maharashtra. I feel I'm pretty good at my financial management. Just wanted a more avenues on building assets, especially various types of mutual funds and other investments. Also, I need a detailed article of the things that come under Section 80C. Any other method by which I can do maximum tax saving? The thing is, if you are good at finance management, then you already ought to know these things.
अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट गुड एट फाइनेंस मैनेजमेंट। सो वेरियस म्यूचुअल फंड्स सेक्टोरल होते हैं, आपको स्मॉल कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, लार्ज कैप तो करना है, या आपको फ्लेक्सी कैप में जाना है, अगेन योर चॉइस। डिटेल सेक्शन एटीसी, सर्च आउट सेक्शन एटीसी वीडियोस इन्वेस्टमेंट्स। एक 30 जून शायद 2021 या 22, इनमें एक मिनी डे ऑफ एजुकेशन पे मैंने सेक्शन 80C पे वीडियो किया था। तो वो है, अगर आप यूट्यूब चैनल मेरा फॉलो करते हैं तो आपको ये सब चीजें वहां पे मिलेंगी। ऑफ कोर्स ये चीजें चेंज होती रहती हैं, मैं आपको पुराना वीडियो का बता रहा हूं, तो शायद आपको उतनी डिटेल उसमें ना मिले, बट यस दीज थिंग्स आर डायनामिक, कीप ऑन चेंजिंग। लेटेस्ट आपको वर्कशॉप में मिलेगा मेरे। सो एनी मेथड बाय विच यू कैन डू मैक्सिमम टैक्स सेविंग, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस व्हिच हैव इंक्रीज्ड नाउ, and of course again at the cost of repetition, my workshop participants are going to experience that very soon in the next month, what all tax saving options have increased for them. I keep on updating the regular ones in the group, but people don't open up WhatsApp groups, they don't watch the videos, they don't follow, read the blogs. I can't help them. So if you believe that you are good at finance management, you need to know these things, and you need to take advantage of the opportunities that come your way via investing. So I hope that answers your query. Query from 161 from Lucknow, Uttar Pradesh. Very difficult to manage expenses with coming inflow of income from clinic. Even if we are doing decent and standard dentistry, then also patients also want us to pay according to our hard work. Almost every patient wants to bargain and pay less, which results in less inflow of income, but expenses are same, resulting in less profit. So the simple thing is give them clarity beforehand, ask them to, you can say, choose whether they want to get it done or not. The problem mostly lies with us because we want कि कोई भी आया कोई खाली ना जाए, कुछ ना कुछ करवा के जाए, and that is where the mindset, you can say, continues to change in certain directions. So आपके नेचुरली अगर बार्गेनिंग होएगी, आप कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कहीं ना कहीं आप मेलो डाउन करेंगे, तो आपके इनकम तो कम होएगी ना, तो एक्सपेंसेस अगर उतना ही है तो अल्टीमेटली तो प्रॉफिट कम होएगा ही होएगा ना. सो if you the second thing is, another factor is diversification of saved money to different investment options. Simple पांच basics में ही कर लो ना, you are sorted. You don't need anything other than these five basics. And this is coming from a guy who has been investing with the help of a big financial advisor and doing it alone now after his death, of course, my dad only. So बहुत चीजों में बहुत कुछ करके, एक्सपेरिमेंट करके, सब चीजों में अल्टीमेटली ये किया है. आप इंटरनेट पे कहीं भी सर्च करेंगे ना, फाइव बेसिस और फाइव बेसिक्स का वीडियो पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं मिलेगा. पूरी इंडिया में किसी भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का वीडियो नहीं मिलेगा जो मैंने बनाया फॉर दिस, बिकॉज दीज आर कमिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, दैट दीज आर द बेसिक्स. अगर एक तरीके से डाइवर्सिफाइड वे में डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की जाए इन दीज फाइव थिंग्स, सॉर्टेड फॉर लाइफ. But yes, you need to give a long rope and you need to be dedicated and disciplined. डेडिकेशन और डिसिप्लिन जो होती है ना, एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाती है, बिकॉज उसमें कोई थ्रिल नहीं आता. हम लोगों की आदत है, हम लोग लाइफ में चाहते हैं थ्रिल. T20 T10 का जमाना, तो वी वांट अ थ्रिल इन अवर लाइफ. वो टेस्ट मैचेस हैव बिकम बोरिंग फॉर लॉन्ग, प्लेइंग द लॉन्ग टर्म गेम और लॉन्ग वर्जन हैज बिकम बोरिंग. सो थिंक अबाउट इट, व्हाट यू वांट. You want to be labeled as a boring, you want to be labeled as someone who is not very you can say aggressive in that sense, you can. People who are aggressive are usually the ones who have lost out on precious time, because when we talk of finance, सिंपल चीज ये होती है कि फाइनेंस जो होता है, इट इज लाइक अ लॉन्ग टर्म गेम, एंड पीपल गेट द थ्रिल ऑफ डूइंग द सेम थिंग. कैसे वो थ्रिल ना चले जाती है करने में. सो इफ यू आर विलिंग टू प्ले द लॉन्ग टर्म गेम, then obviously no one can stop you. If you are not willing to change, then no one can help you. So it's as simple as that. So different options में डालना बहुत जरूरी है. It is anyways required that you don't put all your eggs in one basket. Sometimes it may get confusing, as you have written. I'm working in a rented place since almost 14 years, have seen my practice growing over time, have dream of having my own place, even saving for that, but always face the fear of variable income if shift to some other place, and also have fear of taking loan as the real estate prices are very high. हम लोग रेंट से डरते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी लोन पे खरीद के, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट बिल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि हमने ब्लैक दिखाने की आदत है. सो वाइट कम होगा, डाउन पेमेंट ज्यादा जाए, डाउन पेमेंट जाए ना जाए, लोन ज्यादा जाएगा. तो सीए भी मना कर देता है, खबरदार इससे ज्यादा डाउन पेमेंट किया तो इससे ज्यादा मत करो. नहीं, मेरे पास है का मतलब नहीं है नहीं देना. आपने आपसे ज्यादा नहीं दे सकते, आपकी आईटीआर सपोर्ट नहीं करती है.
आप लोन लो, आप लोन लो। तो रेंट देने के बजाय हम ईएमआई देना शुरू कर देते हैं, थिंकिंग चलो कोई बात नहीं, इधर दे रहे थे अब इधर दे रहे हैं, कम से कम 8 10 5 साल वट एवर द लोन अमाउंट इज और वट एवर द लोन टेन्योर इज, इतने में हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। एंड वी स्किप अवर एलटीआई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वी स्किप अवर ऑल्टरनेट ट्रिप, रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। लोग ये समझते नहीं है कि रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मिस करोगे तो आप अपने बुढ़ापे का नुकसान कर रहे हो। कोई नहीं आपको फीड करने वाला आपके बुढ़ापे में आके। एंड इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन दैट एंड पेइंग ईएमआई इन लिeu ऑफ दैट, कल को आपने चल यार कुछ ना से हम नहीं जोड़ा कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी तो बन गई ना, प्रॉपर्टी को बेच के हम लोग अपना बुढ़ापा सवार लेंगे। टुमारो फ्लाईओवर कम्स एंड योर कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी गोज डाउन टू जीरो। जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ पे कब फ्लाईओवर बन जाए, कब प्रॉपर्टी के प्राइसेस एकदम मिट्टी हो जाए, यू डोंट नो। सो रिलाइंग ऑन रियल एस्टेट इज लाइक एब्सोल्युटली लाइक अ वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है ना। वर्ड ऑफ माउथ पे आप रिलाई करते हैं, पेशेंट्स आते हैं, आ गए तो दिवाली, ना आए तो दिवाला। सेम हैपेंस विद रियल एस्टेट, बढ़ गई किस्मत तो 4 5 गुना देके जाएगी, नहीं हुआ तो जितने में लिया उससे भी कम में जाएगी। थिंक ऑफ इट कि 60 साल की एज में अगर आपको ये शौक लगे कि फ्लाईओवर आ गया, आपकी प्रॉपर्टी आपने जो मान लो 20 लाख में ली थी, यू आर एक्सपेक्टिंग कि 50 60 लाख की हो जाएगी, वो मार्केट में 5 लाख में बिक रही है, कैसा लगेगा आपको? 5 लाख में अपना बुढ़ापा गुजार लोगे? बिकॉज यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन योर रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी। थिंक, आपके पास बेसिक्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट टू क्रिएट अ मीनिंगफुल फ्यूचर लाइफ, फ्यूचर रिटायर्ड लाइफ, बेसिक्स 5 कवर हो, उसके बाद पैसा बचता है तो आग लगाओ, बर्न योर मनी इन एनीथिंग दैट यू वांट, क्रिप्टो में डालो, सिल्वर में डालो, रियल एस्टेट में डालो, जिसमें अच्छा लगता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालो, जहां मर्जी डालो, 5 बेसिक्स क्लियर करो। मैं तो स्टिल ये बोलता हूँ अगर बच जाए तो उसमें से भी अग्रेसिव होकर उसी कैटेगरी में डाल दो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। लेकिन नहीं, हमारे को एड्रेनलिन रश चाहिए, फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में जाना है अपने को, चाहिए, आपकी चॉइस है। फियर ऑफ कंफर्ट जोन तो रहेगा रहेगा, जब भी आप शिफ्ट करेंगे फियर ऑफ अननोन रहेगा रहेगा। बट आई एम नॉट इवन टॉक्ड अबाउट कि नई जगह पे जाके आपका क्लिनिक चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि आप जो नए क्लिनिक के लिए एक जंप लेने जा रहे हैं लोन वाली, वो लोन वाली मैं आपको वो साइड ऑफ द स्टोरी दिखा रहा हूं, वो साइड ऑफ द मूवी दिखा रहा हूं जो आपको बहुत कम लोग दिखाते हैं। इट मे पे यू वंडर्स, बट इट कैन, यू कैन से क्रैश यू एब्सोल्युटली ऑल्सो। फिर उस स्टेज पे क्या होएगा, क्या करते लोग, डिप्रेशन में, सुसाइड में, तो ये चीजें एंड होती हैं। ह्यूमन लाइफ इज ब्यूटिफुल, इट शुड नॉट हैव सच अ पेनफुल एंडिंग, दैट इज व्हाट आई बिलीव। लाइफ इज देयर टू लिव एंड एंजॉय। ठीक है, रिस्क फैक्टर होना चाहिए, पर आप अपना रिस्क फैक्टर या रिस्क एपेटाइट आइडेंटिफाई करो, उसके हिसाब से अपना डिसीजन लो। और अगर उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं तो देन वी लीड अ पेनफुल एंड अ सॉरोफुल लाइफ। अगर ये चीज पसंद है आपको, कर लीजिए, कौन रोकता है आपको? लाइफ आपकी चॉइस, आपकी जीवन आपका, मरण आपका, आपकी चॉइस। आई होप आई आंसर योर क्वेरी। So query from Surat, Gujarat, 162. How many registrations required to open dental clinic? Because this is not teach, this is not taught, okay, during dental course. When to name dental clinic? What to name, I think. Dental clinic or hospital. What are the legal documents required for dental assistant for job in clinic? How to do all staff on legal paper? पहले तो यार लोगों को ना, मेरे को समझ नहीं आती कौन सी भाषा में लिखते हैं ये, ना इंग्लिश है ना संस्कृत है ना हिंदी है। तो समझने के लिए मेरे को दिमाग चाहिए थोड़ा सा कि कौन सी ग्रामर है। सबने, सॉरी टू से, बट दिस इज यू कैन से एब्सोल्युटली एक भी लाइन करेक्ट नहीं है। सो एनीवेज, सो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन डेंटल क्लिनिक कुछ नहीं होता है, हमारे को कोई परमिशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यस, देर आर अ फ्यू प्लेसेस जहाँ पे सोसाइटीज में आपको क्लियरेंस चाहिए होता है, इन बॉम्बे और एनी अदर मेट्रो, इन पुणे, बॉम्बे और सम सिटीज, जहाँ पे आपको मेट्रो में या आप सॉरी आपके सोसाइटी से क्लियरिंग चाहिए होता है। बट clinics are not disallowed to be opened in a residential area. You can open up even a commercial clinic like this. Nursing home hospitals पे ban है, so they are still not allowed, but others are surely. So alarm has went off, so this might be the last query. So what to name dental clinic and hospital? You should name it a dental clinic also. It is in the code of dental ethics also that you can't question your name as a dental hospital. इट दांतों का अस्पताल बहुत लोग बोलते हैं, बट ऑफ कोर्स डिक्शन में ठीक है, बोलने में ठीक है, और रिटर्न में यू शुड अवॉइड दैट वर्ड। इसलिए है कि आपने हॉस्पिटल रख दिया तो कोई आप पे केस हो जाएगा, बट यू शुड अवॉइड दैट, इट इज फॉलोइंग इन द अनएथिकल कोड ऑफ डेंटल प्रैक्टिसेस। सो लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डेंटल असिस्टेंट फॉर जॉब, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड अगर है तो, उसके क्वालिफिकेशंस। टेक्निकली तो डीसीए के हिसाब से जाएं तो एक अनक्वालिफाइड डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल असिस्टेंट रखना क्राइम है, या इट इज अनएथिकल, आई मीन टू से।
But this is not a practical thing because most of the dental hygienists or qualified assistants, they work in colleges. Very rare of them work in clinics. So most of them are, you can say, non-qualified, but maybe highly skilled and highly trained. So most of them are non-qualified but highly skilled and trained, जो private clinics में काम करते हैं. So as such legal documents वो applicable नहीं होते हैं. But yes, कोई भी नया आप employee रखते हैं तो it is always better to inform the nearby police station. उनका फॉर्म होता है तो एम्प्लॉय की आइडेंटिफिकेशन वो वेरिफिकेशन करते हैं, उसके 100 रुपये चार्जेस लेते हैं एटलीस्ट इन पंजाब. सो यू शुड डू दैट वंस यू हायर एनी न्यू एम्प्लॉय दैट इज देयर. तो हाउ टू डू ऑल स्टाफ ऑन लीगल पेपर, हाउ टू डू स्टाफ ऑन लीगल पेपर, इसका मतलब क्या हुआ मैं समझू. मतलब स्टाफ को आप लीगल पे लाना चाहते हैं तो फिर आपको उनको ऑन रोल्स देना पड़ेगा, उनको पीएफ भी देना पड़ेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे. मोस्ट ऑफ डेंटल क्लिनिक एम्प्लॉयज आर ऑन एडहॉक बेसिस ऑन एंड नॉट ऑन पेपर. दे आर लाइक, कोई उनको नोटिस नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना, नाम उनको बेनिफिट्स देते हैं, नाम उनको वो चीज देते हैं जो वो डिजर्व करते हैं एटलीस्ट आफ्टर 10 to 15 years ऑफ स्टे विद अस. But that is how the system is. So most of the things are not working as per, you can say, our whatever we want to. So I hope I have understood and answered whatever you wanted to ask. But kindly do specify your queries very clearly. It becomes hard for me sometimes also to understand these things. So with this we come to an end at query number 162. We'll begin our session tomorrow from 163. And of course we are almost at the end of medium priority and low priority, and then we'll come to, you can say, no priority pain points. And yes, thank you so much for your patient hearing. And this is what is coming up for you tomorrow morning, the YEP series finale, episode number 11, 8 a.m. to 10 a.m. We have been doing at 6:45 to 8:15, but tomorrow is Sunday and it was anyways a buffer day for me. This is how I plan things. I knew that I may have to travel and I wanted to keep a buffer day. I did not want to take that in 2024. I wanted to finish that. So I've kept a buffer zone of 8 to 10. We might finish at 9:30. We might carry on till 10:30 depending on the flow of the queries. But this is the query. So if you want to attend, this is the webinar that will happen. That will finish the practice pain points for today. And of course, then the finale of the finance. Tomorrow we don't meet at 7:30. We meet at 5 p.m. Again, we might finish at 6:30. We might latest finish by 7:30. So the low priority are not that much. So we may finish early as well. So number 275, want to attend tomorrow 5 to 7 p.m. It has already been changed in the Zoom room. So when you register, you will get, you can say, time-wise mail accordingly in that case. So this is the finance workshop that is coming up that I was mentioning, although the registration has closed on 25th December. But if some of you are willing, you can ask me and I can enroll you. But this is the, you can say, basic all-in-one A to Z workshop of taxation and investment in 4 days, 2 days, split modules. First is on 6th of 7 Jan, second is on 20 and 21 Jan, 9 a.m. to 6 p.m. These are the 4 live days. Along with that, there are 6 pre-recorded days of 1 hour each. So the workshop starts Monday, actually on 1st Jan with orientation session. Tuesday onward, Tuesday, Wednesday, and Thursday, they will be having videos, pre-recorded ones. Friday is a break for them to download the workbook and of course register for the Zoom. And Saturday, Sunday, I'll meet them live in the first session. So what is your homework for today? Your homework is to, again, post your top 3 to 5 takeaways. Develop this trait of giving back to the society. This is a part of your end life. So you can post it on social media as well. So do it right away after the session. Cement your learnings because writing is the best form of learning. I'm sure there would be ample. If you want to tag me on social media, my presence everywhere is by similar name, Dr. Bhavdeep. So anywhere I'm active on these things, I'll be doing it. So of course, if the YouTube also is by same name, Dr. Bhavdeep, and Facebook group is also by same name, but it has another name of PhD Plugging Handicaps in Dentistry. The content after tomorrow, once I finish the 90-day challenge, will be mellowed down in a different format. The blogs will finish, a few things will finish, a few things will continue, but in a different format. So the activation, you can say experimentation, will move on to another stage. So, but still the group will be active. I'll be there. I'll be answering the queries. It is anyways a one-way traffic. So people on Facebook, if you want to ask, okay, great. So some of you writing that your queries are already answered. So great. So if you want to be there, Facebook guys, if you want to be in my WhatsApp community, if you are not there, please do send me a message, as you might be seeing on the screen. So do send me a message. I'll add you. And of course, do send me your feedback. Bookies and Brickbat both will be welcome in equal measure.
And I stop my share for questions. And firstly, I'll take up the questions from chat if there are any, because the Facebook questions have been answered. So I believe that there would be there. Okay. Okay, Dr. Shravani, thank you. Dr. Manali, thank you. Dr. Divya, thank you. Dr. Bhavna, thank you. Dr. Aarti, thank you. Any queries, please feel free to switch on your camera and unmute yourself. Let me just unmute you all. I'm sorry, I muted you. Yes, you can unmute yourself and ask anything if not clear. Hello, sir. Hi, Dr. Shravani. Good evening, sir. Good evening. Sir, recently I bought these SGBs from SBI online mode, sir. I didn't get any mail of the confirmation mail. I didn't get. How to? Is there any certificate? Check out. Firstly, check out your spam mail. The mail won't come from SBI. The mail will come from eKuber. Just search out your spam folder. It will be there for sure. It will be there, because if it is not there, rare chance, if it is not there, it will come. The money will come back into your account after the settlement date, which is again a rare possibility. You will be offered. If it is not there, you can contact SBI also, or you can say SBI online department, and they will issue you a certificate on behalf of eKuber. So you will be there. So you will be getting it, because usually eKuber wali mail jo hai, that goes in the spam section. So check out those sections. eKuber, KUBER. So if it is there, fine. If not, you can say you can drop a mail to the SBI, but wait for a couple of days. Sometimes the mail gets delayed by a couple of days since it is the year end. So probably wait till maybe 2nd of January. And if you still don't receive it, and if you don't find it in spam also, then you can drop a mail to the SBI Net Banking. Contact them. Okay. 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 Any more queries? Anything you want to ask? All done. So I see you tomorrow morning 8 a.m. for the practice pain point grand finale. So hope to see many of you. It is a Sunday. It is the last day of the year. Let's make it count. Bye-bye. Take care. Have a great weekend ahead.